एक बच्चा स्कूल से वापस आता है। माँ मसरूफ़ है, बाप काम पर है और बच्चे को भूख लगी है। किचन में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स और फ्रीज़र में फ्रोज़न नगेट्स। बच्चा खुश हो जाता है, 2 मिनट में नूडल्स तैयार, 5 मिनट में नगेट्स तैयार, साथ में एक बेकरी का केक, केचअप और कोल्ड ड्रिंक। बाहर से ये एक सिंपल स्नैक लगता है, लेकिन अंदर से ये बच्चे के जिस्म, दिमाग, मूड, वेट, हार्मोन्स, स्लीप और अटेंशन स्पैन के साथ क्या कर रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैकेज फूड, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोज़न फूड्स, बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, केक्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, कलर्ड ड्रिंक्स और बच्चों की हेल्थ के उस हिडन कनेक्शन की जिस पर अक्सर पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते या ध्यान देना नहीं चाहते। और सबसे शॉकिंग बात, दुनिया भर की रिसर्च बता रही है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का ताल्लुक ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स और अर्ली डेथ तक जोड़ा जा रहा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की 2024 रिव्यू ने तकरीबन 10 मिलियन लोगों के डेटा पर मबनी स्टडीज़ को रिव्यू किया और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को 32 हार्मफुल हेल्थ आउटकम्स के साथ एसोसिएटेड पाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर पैकेट फूड जहर है? क्या इंस्टेंट नूडल्स खाने से फ़ौरन डेथ हो जाती है? क्या शुगर वाक़ई बच्चों को हाइपर एक्टिव बनाती है? और क्या हम अपने बच्चों को कन्वीनियंस के नाम पर स्लो पॉइज़न दे रहे हैं? आज फैक्ट्स भी होंगे, ड्रामा भी होगा और सॉल्यूशन भी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका साँस लेना। व्हाट इज़ पैकेज्ड फूड? सबसे पहले एक सिंपल फ़र्क समझें। हर पैकेज फूड बुरा नहीं होता। मसलन प्लेन ओट्स, वेजिटेबल्स जो कि फ्रोज़न हो, प्लेन योगर्ट, मिल्क कार्टन या सील्ड दाल पैकेट के अंदर, ये हार्मफुल नहीं है। असल मसला है अल्ट्रा प्रोसेस फूड का। अल्ट्रा प्रोसेस फूड वो होता है जो फैक्ट्री में इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो चीप भी हो, लॉन्ग शेल्फ लाइफ भी हो, टेस्ट में भी एडिक्टिव हो और बार बार खाने का जी चाहे। इसमें होता क्या है? हाई सॉल्ट, हाई शुगर, रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, चीप ऑयल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, कलरिंग एजेंट्स और टेस्ट इन्हांसर्स या टेस्ट को बढ़ाने वाली चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन कम होते हैं या गायब होते हैं। ये फूड आपके पेट को तो भर देता है लेकिन बॉडी को नरिश नहीं करता। इसलिए बच्चा नूडल्स खाने के बाद भी 1 घंटे बाद चिप्स मांगता है। और चिप्स भी क्या बात, क्या न्यूट्रिशनस चीज़ होती है। केक खाने के बाद चॉकलेट मांगता है। स्वीट ड्रिंक पीने के बाद क्रंची खाने का दिल करता है। क्यों? चटोरापन क्यों है? क्योंकि ये फूड स्टमक को तो कैलोरीज देता है मगर ब्रेन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब इंस्टेंट नूडल्स 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? डेंजरस इंस्टेंट नूडल्स, क्योंकि अक्सर नूडल्स में सोडियम यानी नमक बहुत ज़्यादा होता है। फ्लावर सैशे में सॉल्ट, एमएसजी, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव्स और समटाइम्स कलरिंग एजेंट्स होते हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा नूडल्स खा रहा है, मसला ये है कि नूडल्स अक्सर मील रिप्लेस कर देते हैं, खाने की जगह खाना शुरू हो जाते हैं। बच्चा दाल चावल नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, वेजिटेबल्स या सब्जियां नहीं खाता, फल नहीं खाता। नूडल्स, बन, चिप्स, बेकरी के आइटम्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक पर सर्वाइव कर रहा होता है। ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। अब ध्यान से सुनिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्दी डाइट के मुताबिक हाई सोडियम ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ाता है। सॉल्ट को कम रखना हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक को रिड्यूस करने में मदद देता है, जबकि शुगर, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को लिमिट करना हेल्दी डाइट का कोर पार्ट है। 2021 में साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट्स आए कि कुछ बच्चों की डेथ इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद हुई। ईस्टर्न केप में 3 बच्चे जिनकी उम्रें 11, 7 और एक छोटा बच्चा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि इनकी डेथ नूडल्स खाने के बाद पेट में क्रैम्पिंग और नौजिया यानी मतली के बाद हुई। फूड सेफ्टी न्यूज़ के मुताबिक साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ ने 5 बच्चों की अमवात होने के बाद ये जाहिर किया कि हो सकता है कि इनकी अमवात इंस्टेंट नूडल्स खाने से हुई हो। नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने एक सप्लायर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट है ऑनेस्टी। ये साबित नहीं हुआ कि इनकी अमवात ऑटोमेटिकली इंस्टेंट नूडल खाने से हुई। ऐसे इंसिडेंट्स में कंटामिनेशन, स्टोरेज, पॉइजनिंग, फूड सेफ्टी, हैंडलिंग या टॉक्सिक एक्सपोजर भी पॉसिबल होता है। इसलिए हम डर नहीं फैला रहे, अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। इंस्टेंट नूडल्स का रियल डेंजर ये है कि जब ये रूटीन बन जाते हैं तो बच्चा रियल न्यूट्रिशन से दूर हो जाता है।
अब फ्रोज़न फूड क्या होता है? फ्रोज़न वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ अच्छी हैं, फ्रोज़न फ्रूट्स यानी फल अच्छे हैं, लेकिन रेडी टू फ्राई, फ्रोज़न पिज़्ज़ा, पैटीज़, फ्राइज़, सॉसेजेस, फ्रोज़न नगेट्स, रोल्स, पराठास, कबाब्स ये मसला बन सकते हैं जब रूटीन डेली बन जाएँ। क्यों? क्योंकि उनमें सोडियम, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और क्वालिटी फैट्स, प्रिजर्वेटिव्स ये सब शामिल होता है और इसके अंदर हिडन कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। प्रोसेस मीट के बारे में डब्ल्यूएचओ ने 2015 में बताया कि ये ग्रुप 1 कार्सिनोजन है। यानी एविडेंस है कि कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है इसके खाने की वजह से। ये मतलब नहीं कि नगेट खाते ही कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये मतलब ज़रूर है कि डेयरी प्रोसेस्ड फ्रोजन मीट को हेल्दी प्रोटीन समझना गलत है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं बच्चा चिकन नगेट्स ही तो खा रहा है, प्रोटीन मिल जाता है, खाने दो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई चिकन है या चिकन के साथ स्टार्च, ब्रेड क्रम्स, सॉल्ट, ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर एनहांसर्स भी हैं। यही कॉम्बो बच्चे का वेट बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ाता है जिससे डायबिटीज़ होती है और टेस्ट बड्स को नेचुरल फूड से बोर कर देता है। फिर बच्चा सिंपल घर का चिकन नहीं खाता, इसे क्रिस्पी कोटिंग चाहिए। सिंपल रोटी दाल नहीं खाता, इसे केचप के साथ फ्राइड फूड चाहिए, फ्रेंच फ्राइज चाहिए। ये टेस्ट ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि बेकरी आइटम्स की। केक, डोनट्स, बिस्किट्स, क्रीम रोल्स, कपकेक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़, ब्राउनीज, मफ़िन्स, स्वीट बन्स। मज़ेदार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मज़ेदार तो हैं, लेकिन ये आपके जिस्म के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सॉफ्ट फूड्स कलरफुल, ब्यूटीफुल और हार्मलेस लगते हैं, लेकिन अक्सर उनमें मैदा, शुगर, चीप फैट, शॉर्टनिंग, मार्जरीन, आर्टिफिशियल कलर और क्रीम और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बेकरी फूड स्नैक नहीं रहता है, ये डेली ब्रेकफास्ट बन जाता है। सुबह केक रक्स विद टी, स्कूल लंच क्रीम बिस्किट्स, इवनिंग में बेकरी पिज्ज़ा स्लाइस और नाइट या रात में स्वीट बन। और फिर पेरेंट्स हैरान होते हैं कि बच्चा मोटा क्यों हो रहा है, बच्चा लेज़ी या सुस्त क्यों है, बच्चा स्टडी पर फोकस क्यों नहीं करता, बच्चा हर वक्त एंग्री इरिटेटेड क्यों रहता है, ज़बान क्यों चलाता है। रिसर्च का एक और बड़ा कंसर्न यही है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हाई कैलोरीज देते हैं मगर सटाइटी या भूख कम देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के इन पेशेंट कंट्रोल ट्रायल में जब बड़ों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट दी गई तो उन्होंने अनप्रोसेस्ड डाइट के मुकाबले में तकरीबन 500 कैलोरीज ज़्यादा खाई। हालांकि फैट, शुगर, मील्स, कैलोरीज, फूड सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है। फाइबर, स्पीड ऑफ ईटिंग, टेक्सचर, फूड स्ट्रक्चर, प्रोटीन सब मैटर करते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड जल्दी खाया जाता है, ज़्यादा खाया जाता है और बार बार खाया जाता है। अब बच्चों के मोटापे की बात करते हैं। आज के बच्चे पहले से कम एक्टिव हैं, मोबाइल ज़्यादा, आउटडोर गेम्स कम, नींद खराब, स्क्रीन टाइम ज़्यादा और खाना उसका तो पूछे ना, मोस्टली पैकेज, शुगरी, सॉल्टी, क्रिस्पी। यूनिसेफ की 2025 चिल्ड्रन न्यूट्रिशन रिपोर्टिंग के मुताबिक पहली बार हिस्ट्री में स्कूल एज चिल्ड्रन और एडolescents में ओबेसिटी यानी मोटापा अंडर वेट से ज़्यादा बड़ा ग्लोबल इशू बन गया है। वर्ल्ड वाइड 5 से 19 साल के तकरीबन 391 मिलियन चिल्ड्रन ओवरवेट हो गए हैं और इसके साथ 163 मिलियन मोटापे के साथ जी रहे हैं। ये सिर्फ यूरोप या अमेरिका का मसला नहीं है, ये मिडल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान हर जगह बढ़ रहा है। और चाइल्डहुड ओबेसिटी सिर्फ मोटापा नहीं है, ये फ्यूचर डायबिटीज़ है, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, लो कॉन्फिडेंस भी है और फ्यूचर का डिप्रेशन भी है। एक ओवरवेट चाइल्ड सिर्फ बॉडी वेट कैरी नहीं कर रहा होता, वो सोसाइटी के कमेंट्स, स्कूल की बुलिंग, लो स्टैमिना, ख़राब नींद और शेम भी कैरी कर रहा होता है। और ट्रेजिक बात यह है कि पेरेंट्स अक्सर समझते हैं कि बच्चा हेल्दी है, थोड़ा सा मोटा है, लेकिन अगर बेली फैट बढ़ रहा है, जहाँ विसरल फैट होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम है और जंक फूड डेली खा रहा है, तो ये हेल्थ नहीं, वार्निंग साइन है। इसको ध्यान से सुने। अब सबसे अहम टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या पैकेज फूड बच्चों को हाइपर एक्टिव बनाता है। सिंपल आंसर है हर बच्चे नहीं, लेकिन कुछ बच्चे सेंसिटिव हो सकते हैं। आर्टिफिशियल फूड डाइज के बारे में कैलिफोर्निया की 2021 की रिपोर्ट ने कंक्लूड किया है कि फूड डाइज कंजम्पशन सिंथेटिक फूड कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और अदर न्यूरो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एसोसिएट होती हैं और चिल्ड्रन कई दफ़ा सेंसिटिव भी हो सकते हैं।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी फूड एडिटिव्स और चाइल्ड हेल्थ पर कंसर्न्स रेज किए हैं, ख़ासतौर पर इसलिए कि चिल्ड्रन अडल्ट के मुकाबले में बॉडी वेट के हिसाब से ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं और उनके ऑर्गन्स भी ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन यहाँ एक मिथ को क्लियर करना ज़रूरी है। शुगर या फूड कलर्स एडीएचडी नहीं करते। एडीएचडी एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, लेकिन कुछ बच्चों में हाई शुगर की ड्रिंक्स, पुअर स्लीप, आर्टिफिशियल डाइज और प्रोटीन ब्रेकफास्ट और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी बिहेवियर को वर्स कर सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ एंगल, बीएमजे की 2024 के रिव्यू में अल्ट्रा प्रोसेस फूड के एक्सपोजर की वजह से डायबिटीज़, ओबेसिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन और कार्डियोवास्कुलर रिस्क समेत मल्टीपल हार्मफुल चीज़ों को एसोसिएट किया गया है। तो मैकेनिज्म क्या हो सकता है? ब्लड शुगर स्पाइक्स, इंसुलिन स्विंग्स, gut microbiome disturbance, nutrition deficiencies, inflammation, poor sleep, overstimulation of brain reward system। और जब बच्चा हर रोज़ चिप्स, नूडल्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी खाता है तो इसका ब्रेन नेचुरल फूड को बोरिंग समझने लगता है। एप्पल बोरिंग हो जाता है, दाल बोरिंग है, एग बोरिंग है, अम्मी ये नहीं खाना, सब्जियां नहीं खानी। लेकिन चिप्स एक्साइटिंग है, और लाओ चॉकलेट एक्साइटिंग है, पॉपकॉर्न खानी है, नूडल्स एक्साइटिंग है, कोल्ड ड्रिंक एक्साइटिंग है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ये सिर्फ फूड हैबिट नहीं है, ये डोपामीन ट्रेनिंग है, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम। अब ज़रा पैकेजिंग को देखें। कार्टून कैरेक्टर्स बने होते हैं, ब्राइट कलर्स, फोर्टिफाइड विद विटामिन्स, रियल फ्रूट फ्लेवर, बट रियल फ्रूट नहीं, सिर्फ फ्लेवर, एनर्जी, फन स्नैक, लंच बॉक्स फेवरेट। लेकिन बैक साइड पर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? शुगर, ग्लूकोज सिरप, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव्स और सोडियम। फ्रंट साइड इमोशनल होता है, बैक साइड साइंटिफिक होता है। फ्रंट साइड आपके बच्चों को टारगेट करता है, बैक साइड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी को चेक करता है। और यही फूड इन्वायरमेंट बच्चों को ट्रैप करता है। चीप फूड एवरीवेयर, स्कूल कैंटीन में, ट्यूशन शॉप पर, पेट्रोल पंप पर, सुपरमार्केट में, ऑनलाइन एड्स, कार्टून के एड्स। बच्चा चॉइस नहीं कर रहा, बच्चे को ट्रेन किया जा रहा है। अब सोल्यूशन क्या है? बगैर घबराए। अब सोल्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा कि नूडल्स ना खाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि बर्थडे केक हराम है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रोज़न फूड कभी ना यूज़ करें। सिंपल रूल है, डेली फूड घर का रियल फूड होना चाहिए, पैकेज फूड ओकेजनल होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए 7 रूल्स। नंबर 1, इंस्टेंट नूडल्स को मील या खाना ना बनाएं, इमरजेंसी स्नैक रखें। नंबर 2, फ्लेवर सैशे आधा यूज़ करें, इसके साथ वेजिटेबल्स और अंडा यूज़ करें। नंबर 3, फ्रोज़न नगेट्स डेली नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा हो गया काफ़ी है। नंबर 4, ब्रेकफास्ट बेकरी बंद करें, फ्रूट बेटर है, योगर्ट, ओट्स, रोटी, एग वगैरह। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक और पैकेज जूस को घर का रूटीन ना बनाएं। और नंबर 6, बच्चों के लंच बॉक्स में बिस्किट के बजाय फ्रूट, एग्स, चीज़, नट्स और होममेड सैंडविचेस दें। नंबर 7, लेबल पढ़ना शुरू करें खुदा के वास्ते। शुगर, सोडियम, ट्रांस फैट, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल कलर्स, ये रेड फ्लैग्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे को फोर्स ना करें, इन्वायरमेंट बदलें। घर में चिप्स होगा तो बच्चा चिप्स मांगेगा, घर में कटा हुआ फल है तो बच्चा फ्रूट खाएगा। बच्चा लेक्चर से नहीं, इन्वायरमेंट से चेंज होता है, और आपको ये एक्शन करने पड़ेंगे उनको ये साबित करने के लिए। अगर एक फूड इतना एडिक्टिव है कि बच्चा घर का खाना छोड़ दे, अगर एक स्नैक इतना सॉल्टी है कि नॉर्मल दाल बोरिंग लगे, अगर एक ड्रिंक इतनी शुगरी है कि वाटर टेस्टलेस लगे, अगर एक केक इतना सॉफ्ट और स्वीट है कि फ्रूट बोरिंग लगे, तो फिर ये फूड सिर्फ फूड नहीं है, ये हैबिट इंजीनियरिंग है। आपके बच्चों के माइंड को हाईजैक किया जा रहा है। हम अपने बच्चों को सिर्फ कैलोरीज नहीं दे रहे, हम उनका फ्यूचर टेस्ट, फ्यूचर वेट, फ्यूचर मूड, फ्यूचर फोकस और फ्यूचर हेल्थ डिज़ाइन कर रहे हैं। आज से पैकेज फूड को दुश्मन ना समझें, लेकिन इसे डेली फ्रेंड भी ना बनाएं। फूड का सिंपल रूल याद रखें, जिस फूड के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आप समझ नहीं सकते, वो फूड आपके बच्चे की बॉडी को भी कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप पेरेंट हैं, इस वीडियो को सेव करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में लिखें आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सा पैकेज फूड यूज़ होता है, नूडल्स, नगेट्स, बेकरी, बिस्किट्स या स्वीट्स। बिकॉज अवेयरनेस का पहला स्टेप है घर के किचन से सच बोलना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई।
ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। यकीन करें, मैं रोज़ाना बच्चे क्लिनिक में देखता हूँ जो इस चीज़ का शिकार हैं, और मैं ये कह कर अपने पेशेंट से थक चुका हूँ कि आप इनके माँ-बाप हैं, आप इस बात का ख़्याल रखें कि इनको असली और ख़ालिस फूड मिले, प्रोसेस्ड फूड नहीं। ये आपका वक्त तो बचाएगा, लेकिन साथ में बच्चे की सेहत को तबाह कर रहा है। आपको शायद इसका अंदाज़ा इस वक्त ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो बच्चा जो अभी 5 साल का है, 33 साल की उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो जाए। और इसका ज़िम्मेदार कौन? आप। और मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो खुदारा इस बात पर ध्यान दें। आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूट्यूब चैनल। आपकी बेहतर सेहत ही मेरा मिशन है। खुदा हाफिज़। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine. So my Hummer got 2 flat tires. Both the rear tires are flat. I don't think it's a vandalism or something, but it could be. The tires were old. We were going to replace it anyways. हमें बदलने थे टायर, तो मैं वो Hummer भिजवा रहा हूँ अभी, इसको टो कर रहे हैं अभी, and then you will see the Hummer getting towed, and it will be sent to the tire place. Costed me around $4,000 to replace 4 tires, all of them. So let me show you up close. This is the flat tire on each side, and this on this side, so obviously we cannot drive it. And then this is being towed on the truck. This is a tow truck here. They're charging me almost $200. तो फिर नए टायर आ चुके हैं चारों, और ये है टो ट्रक। और ये है Hummer, इसको पूरा टो करेगा यहाँ से। I don't think he needs to start it. All good? Yeah, no, that's good. Just trying to make a video. The cool part about the Humvees is they're built to basically take IEDs. Yeah. So there's so many places I can hook up to it. It's just a matter of which one's going to be the best for your truck and mine. This is a tank. So the Humvee is now loaded on it. I'm going to put that on my YouTube channel. That's why I'm making a video. Oh, no, you're okay. You're Yeah. okay. I am not shy. You were fine. I love doing these long. Yeah, the way you look like you ride a horse, man. You're in a wrong vehicle. I used to. And I get myself a bad piece instead of this right now. Yeah. So guys, you can see Humvees are all loaded up. This is a tow truck. So guys, they loaded the Humvee, and it will be taken now to a tire shop. It's a process to change their tires because they're also interconnected with their air valve, where you can inflate and deflate the tires from inside of the Hummer, depending on the off-roading and whatever you're doing, or in a desert. अगर आप रेगिस्तान में हो तो अंदर से भी आप इसको टायर की हवा कम कर सकते हैं बटन दबा के, ताकि वो टायर धंस ना जाएं। तो
ये अभी इसको ले जाएगा थोड़ी देर में. So you'll see the thing lifting up. इसको पूरा बांध दिया है, tied up. ये Hummers are very heavy trucks, and obviously the army vehicles built to last. All right, man. Thank you. Gets it on down the road. Take care. ज़रा एक मंजर इमेजिन करें. आप एक पुराने बंद कमरे में दाखिल होते हैं. दरवाज़ा खुलते ही हल्की सी बदबू, हवा में उड़ती हुई बारीक धूल. आप थोड़ा सा रुक कर एक गहरी सांस लेते हैं और इसी लम्हे में एक इनविजिबल वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है. न किसी इंसान ने आपको छुआ, न किसी ने खांसा, न कोई इन्फेक्टेड शख्स आपके करीब था, सिर्फ एक हवा का झोंका. चंद दिन बाद आपको हल्का बुखार होता है, बॉडी में थकन और बॉडी में दर्द. आप सोचते हैं ये तो आम सा फ्लू है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि अगले 48 घंटों में आपके लंग्स फ्लूइड से भरना शुरू हो जाएंगे. आप सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से नीचे गिरेगा और फिर वेंटिलेटर, आईसीयू और बाज़ केसेस में मौत. यह है हैंटा वायरस, एक ऐसा वायरस जो क्विकली अटैक करता है और जिसकी 20 से 40% तक मोर्टेलिटी रेट है. और हाल ही में ये वायरस एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर दोबारा सामने आया, एक लग्जरी क्रूज शिप में. तो हैंटा वायरस है क्या भला? हैंटा वायरस एक ज़ूनोटिक वायरल इन्फेक्शन है. ज़ूनोटिक का मतलब है वो बीमारी जो एनिमल्स से इंसानों में मुंतकिल हो. इस वायरस के प्राइमरी होस्ट होते हैं डियर माइस, फील्ड रैट्स और वाइल्ड रोडेंट, सब चूहे. ये एनिमल्स खुद बीमार नहीं होते, ये नॉर्मली ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी यूरिन, ड्रॉपिंग्स और सलाइवा, इसके अंदर ये वायरस पाया जाता है. जब ये खुश्क हो जाते हैं तो माइक्रोस्कोपिक एरोसोल पार्टिकल्स बन जाते हैं और जब इंसान उन्हें इनहेल करता है या सांस लेता है तो वायरस लंग्स के जरिए ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाता है. यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट समझना ज़रूरी है. ये एयरबोर्न वायरस डस्ट के जरिए ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये कोविड की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड आसानी से नहीं करता. यानी ये साइलेंट है, हिडन है और इसीलिए ज़्यादा डेंजरस है. नाउ ओरिजिन क्या है इस चीज़ का? हैंटा वायरस की डिस्कवरी एक तारीखी वाक़ये से जुड़ी हुई है. कोरियन वॉर 1950 के अंदर. इस दौरान हज़ारों सोल्जर्स अचानक बीमार पड़ गए थे. सिम्टम्स थे हाई फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग, किडनी फेलियर. तो डॉक्टर्स कंफ्यूज थे कि ये कौन सी बीमारी है. कई साल बाद रिसर्च से मालूम हुआ कि ये डिजीज़ चूहों के ज़रिए फैल रही है और इसे वायरस को नाम दिया गया हैंटा वायरस, क्योंकि ये हैंटन रिवर के पास डिस्कवर हुआ था. ग्लोबल स्प्रेड क्या हुआ? वक्त के साथ ये वायरस मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में पाया गया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और साइंटिस्ट ने इसको 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया. नंबर 1 ओल्ड वर्ल्ड हैंटा वायरस, जिसमें एशिया और यूरोप हैं, और ये कॉज करता है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम. ये डिजीज़ किडनीज और वेस्कुलर सिस्टम को डैमेज करती है. और दूसरा न्यू वर्ल्ड हैंटा वायरस, रीजन्स हैं अमेरिका. ये कॉज करता है हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, HPS. ये ज़्यादा लीदल है, ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा, क्योंकि ये डायरेक्टली लंग्स को अटैक करता है. अब जिस्म के अंदर होता क्या है जब आपको हैंटा वायरस होता है? अब हम आते हैं सबसे अहम और डेंजरस पार्ट पर. वायरस जिस्म के अंदर क्या करता है? शुरू में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, इसे कहते हैं प्रोड्रोमल स्टेज और फेज़ 1. फीवर, चिल्स, मायल्जिया यानी बॉडी एक्स, सर में दर्द, थकन. ये स्टेज तकरीबन 3 से 5 दिन तक रहती है. यहाँ पेशेंट अक्सर गलती करता है और ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, क्योंकि ये सिम्टम्स आमतौर से बहुत से वायरल इन्फेक्शन के होते हैं जो कि जानलेवा नहीं होते. दूसरा स्टेज 2 कार्डियोपल्मोनरी फेज़. ये वो स्टेज है जहाँ डिजीज़ सडनली वर्स होती है. वायरस लंग्स के कैपिलरी
खून की नालियों को डैमेज करता है और वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो कि ब्लड का हिस्सा है वो लीक होकर लंग के टिश्यू में पहुंच जाता है, यानी लंग फ्लूइड से भर जाता है। इसकी अलामात क्या हैं? सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी डिस्निया, सांस लेने में शदीद दुश्वारी, सांस तेज़ी से आना, चेस्ट की टाइटनेस, खांसियाँ, और पेशेंट अक्सर डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं अंदर से डूब रहा हूँ। तीसरा स्टेज शॉक एंड ऑर्गन फेलियर। अगर कंडीशन सिवियर हो जाए तो हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, और मल्टी ऑर्गन फेलियर, आईसीयू एडमिशन ज़रूरी हो जाता है और वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन इवन विद एडवांस मेडिकल केयर, मोर्टेलिटी या मौत के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं आउटब्रेक की, क्रूज शिप की। एक लग्जरी क्रूज शिप जहां लोग वेकेशन एंजॉय करने गए थे, वही जगह है जो एक मेडिकल इमरजेंसी बन गई। पैसेंजर्स को सिम्टम्स शुरू हो गए, फीवर, वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और इनिशियली डॉक्टर्स को लगा कि ये नॉर्मल इन्फेक्शन है, क्या पता फ्लू है, लेकिन फिर केसेस जल्दी से ख़राब होने लगे, आईसीयू एडमिशन होने लगे, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस हुई और मल्टीपल डेथ्स। कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं अब तक। डायग्नोसिस क्या निकला? एंडीज स्ट्रेन ऑफ हैंटावायरस। एंडीज स्ट्रेन क्यों ख़ास है? ज़्यादातर हैंटावायरस स्ट्रेन्स ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं करते, लेकिन एंडीज स्ट्रेन में लिमिटेड पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो जाती है। इसी वजह से ये आउटब्रेक ख़तरनाक है। अब ग्लोबल कंसर्न या दुनिया में ये लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि हेल्थ अथॉरिटीज़ अलर्ट हो गई हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये कोविड जैसा पेंडेमिक नहीं है, ट्रांसमिशन लिमिटेड है, जनरल रिस्क पॉपुलेशन को कम है, लेकिन फिर भी ये ख़तरनाक वायरस है। और इंटरनेट पर एक और चीज़ वायरल हुई। सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया कि हैंटा वायरस की आउटब्रेक होगी, जो सिम्पटम एक मशहूर कार्टून है, लेकिन लोगों ने इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाया। लेकिन हकीकत क्या है? किसी भी सिम्पसन्स एपिसोड में हैंटा वायरस का जिक्र नहीं है। जो दिखाया गया वो सिर्फ फिक्शनल आउटब्रेक सिनेरियो था। हकीकत यह है कि ये प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि कोइंसिडेंस और एग्जैजरेशन है। अहम सबक क्या मिलता है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी डेंजरस होती है, क्योंकि पैनिक क्रिएट करती है। और ये वायरस इतना ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि इसका एक्सपोजर इनविजिबल है, आपको पता ही नहीं चलता कि एक्सपोजर कब हुआ। डायग्नोसिस डिले हो जाता है क्योंकि सिम्टम्स फ्लू जैसे होते हैं, और एंटीवायरल ट्रीटमेंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो ये तेज़ी से फैलता है। 48 घंटों में पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है। हाई मोर्टेलिटी रेट है 20 से 40%, मतलब 100 में से 20 से 40 लोग मर सकते हैं। नाउ चूहों को कैसे कंट्रोल करें? घर साफ रखें, क्रैक्स को सील करें और फूड स्टोरेज को सिक्योर करें। सेफ क्लीनिंग प्रोटोकॉल अपनाएं, ड्राई शॉपिंग को अवॉइड करें, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करें और ग्लव्स और मास्क पहनें। और ट्रैवल की प्रिकॉशंस में ऐसी जगहों पर ना जाएं जो काफ़ी दिनों से बंद हैं, जैसे कैंपिंग में एहतियात करें, वहाँ पे टूटे फूटे घर या लकड़ियों के बने हुए कैबिन में ना जाएं। अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन, अगर एक्सपोजर के बाद सिम्टम्स आएँ तो फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाएं। हैंटावायरस कोई वाइड स्प्रेड पेंडेमिक नहीं है, लेकिन ये हमें एक हकीकत सिखाता है कि ख़तरा हमेशा विजिबल नहीं होता। कभी कभी वो खामोशी से हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है, हवा में, धूल में और हमारी अपनी सांस में। हर वायरस इंसान से नहीं फैलता, कभी कभी सिर्फ एक सांस आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूट्यूब चैनल। आपकी बेहतर सेहत ही मेरा मिशन है। खुश रहिए और एहतियात कीजिए। खुदा हाफिज। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine. आपके जिस्म में अभी इस वक्त एक बीमारी हो सकती है और आपको बिल्कुल एहसास नहीं, ना दर्द, ना बुखार, ना कोई वाज़ेह अलामत, बस थकावट है, जैसे आप सोचते हैं मौसम का असर हो गया है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया के 30% से ज़्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में 29% आम आबादी और 58% डायबिटीज़ के मरीज़ इसका शिकार हैं। इस बीमारी का नाम है फैटी लिवर डिजीज़, और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों होती है, कैसे पहचानें, और सबसे अहम बात, क्या किया जा सकता है रिवर्स करने के लिए इसे, बगैर किसी महंगी दवाई के यूज़ के बगैर। मैं हूं डॉक्टर इमरान रज़ा।
यूएसए में 18 साल से फैमिली फिजिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ और आज इस वीडियो में आपको वो सब बताऊंगा जो आपका मुकामी डॉक्टर आमतौर पर नहीं बताता। हमारा लिवर यानी जिगर जिस्म का सबसे मेहनती हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। ये 500 से ज़्यादा काम करता है। खुराक हजम करना, जहरीले मादे साफ करना, कोलेस्ट्रॉल बनाना, ब्लड शुगर कंट्रोल करना, सिर्फ कुछ मामूली चीज़ें हैं जो ये करता है। आमतौर पर जिगर में थोड़ी चर्बी होती है, ये ठीक है, लेकिन जब जिगर के 5% से ज़्यादा वज़न फैट बन जाए तो इसे फैटी लिवर कहते हैं। और जब ये चर्बी जिगर में सोजिश पैदा करने लगे यानी इन्फ्लेमेशन, तो ये मैश यानी MASH बन जाती है, जो कि बहुत ख़तरनाक मरहला है। इस बीमारी का नया साइंसी नाम है MASLD यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़। पहले इसे NAFLD कहा जाता था यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। नाम बदल गया है, बीमारी वही है और ये तेज़ी से बढ़ रही है। फैटी लिवर 4 मराहल में आगे बढ़ती है। पहला मरहला सिर्फ चर्बी, दूसरा मरहला चर्बी के साथ इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश यानी मैश, तीसरा फाइब्रोसिस यानी जिगर में दाग पड़ने लगते हैं, और चौथा सिरोसिस। जब जिगर मुस्तकिल ख़राब हो जाए तो फिर लिवर कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। अच्छी खबर यह है कि पहले और दूसरे मरहले में ही मुकम्मल तौर पर ठीक होने का इम्कान होता है, लेकिन इसके लिए पहचान ज़रूरी है, अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है, अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है। मेरे यूएसए के क्लिनिक में आने वाले पाकिस्तानी और जनूबी एशियाई मरीज़ फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजूहात ये हैं। नंबर 1, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा और चावल, सफ़ेद आटा, चीनी, मीठे मशरूबात, ये सब जिगर में बराह रास्त चर्बी बनकर जमा होते हैं। फ्रुक्टोज यानी फलों वाली चीनी जब ज़्यादा ली जाए तो लिवर इसे सीधा फैट में बदल देता है। नंबर 2, मोटापा और पेट की चर्बी। अगर मर्द की कमर 40 इंच से ज़्यादा है और औरत की 35 से ज़्यादा, तो फैटी लिवर का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। नंबर 3, टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ के 58% मरीजों को फैटी लिवर होता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जिगर में चर्बी जमा करती है। नंबर 4, बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दफ्तर में बैठना, मोबाइल पर वक्त गुजारना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, ये जिगर की चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। और एक बहुत अहम बात, फैटी लिवर सिर्फ मोटे लोगों को नहीं होता, लीन फैटी लिवर भी होता है, यानी एक ऐसे लोग जो बाहर से पतले लगते हैं लेकिन अंदर से जिगर में चर्बी जमा है। ये आमतौर से जनूबी एशिया में ज़्यादा पाया जाता है। फैटी लिवर को खामोश बीमारी कहा जाता है क्योंकि शुरू में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जिस्म के कुछ इशारे ज़रूर देता है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सिम्टम या अलामत नंबर 1, मुस्तकिल थकावट। पूरी रात सोने के बावजूद सुबह थके हुए उठना, ये जिगर की थकावट की निशानी हो सकती है। जिगर जब सही काम नहीं करता तो पूरे जिस्म में एनर्जी की कमी आती है। नंबर 2, पेट के ऊपरी हिस्से दाएं हिस्से में भारीपन यानी इस तरफ, पसलियों के नीचे दाएं तरफ हल्का बोझ या तकलीफ, ये बढ़े हुए जिगर की अलामत हो सकती है, जिसे हेपेटोमेगली कहते हैं। अलामत नंबर 3, भूख का कम होना। अगर आपको पहली जैसी भूख नहीं लगती, खाना देखकर दिल नहीं करता, तो ये जिगर का इशारा हो सकता है कि भाई मुझे चेक करो। नंबर 4, लिवर एंजाइम्स का बढ़ना। खून में टेस्ट कराएं, ALT और AST, ये 2 एंजाइम्स हैं जो ब्लड टेस्ट में आती हैं, और अगर ये बढ़े हुए हों तो जिगर तकलीफ में है। नंबर 5, पेट का फूलना और गैस। हर वक्त पेट भरा हुआ है, महसूस होना कि ब्लोटिंग हो रही है, भारीपन, ये भी जिगर की खराबी से जुड़ी अलामात हैं। और सबसे अहम बात, फैटी लिवर के 80% मरीजों को कोई अलामत नहीं होती, इसलिए अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से बाकायदा स्क्रीनिंग ज़रूरी है, ख़ासतौर पर अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या मोटापा है तो। यूएसए में अपने मरीजों को हमेशा टेस्ट करवाता हूँ जब मुझे फैटी लिवर का शक हो। पहला ब्लड टेस्ट यानी LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे कहा जाता है, इसमें ALT, AST और GGT देखते हैं। अगर ये बड़े हुए हैं तो जिगर पर तवज्जो देना ज़रूरी है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन। ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है। अल्ट्रासाउंड में जिगर की चर्बी साफ नज़र आती है और इसे ग्रेड 1, 2, 3 में तकसीम किया जाता है। तीसरा, फाइब्रोस्कैन एक ख़ास अल्ट्रासाउंड है जो जिगर में दाग यानी फाइब्रोसिस की मकदार पता करता है बगैर बायोप्सी के। अगर पाकिस्तान या किसी भी जगह फाइब्रोस्कैन दस्तियाब नहीं तो FIB-4 स्कोर निकाला जा सकता है जो AST, ALT, एज और प्लेटलेट काउंट से हिसाब होता है। ये बिल्कुल मुफ्त है, ऑनलाइन कैलकुलेटर। ये वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि आप ठीक से सुने। फैटी लिवर ख़ास तौर पर पहले और दूसरे मरहले में मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। कोई ख़ास दवाई नहीं चाहिए, सिर्फ लाइफस्टाइल बदलनी है।
पहला और सबसे अहम कदम वज़न कम करना। तहकीक के मुताबिक अपने वज़न के सिर्फ 5 से 10% कम करने से जिगर की चर्बी नुमायां तौर पर कम हो जाती है। यानी अगर आपका वज़न 80 किलोग्राम है तो सिर्फ 4 से 8 किलोग्राम कम करने से फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा कदम मेडिटेरेनियन डाइट। मेयो क्लिनिक और दुनिया के तमाम गाइडलाइंस यही डाइट तजवीज़ करते हैं। इसमें क्या खाएं? सब्जियां, दालें, मछली, जैतून का तेल, अखरोट, और क्या छोड़ें? मीठे मशरूबात, सफ़ेद चावल, बेकरी की तली हुई चीज़ें। चाय और कॉफ़ी बगैर चीनी के जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि रोज़ाना 2 से 3 कप ब्लैक कॉफ़ी फैटी लिवर को बेहतर करती है। ये पाकिस्तान में भी आसानी से दस्तयाब है। तीसरा स्टेप वर्जिश। रोज़ाना सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग 30 मिनट चलना काफ़ी है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं। हफ्ते में 5 दिन वर्जिश जिगर की चर्बी को तेज़ी से घटाती है। चौथा कदम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर से परहेज़, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़, जूसेस, बेकरी के आइटम, सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा, ये सब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का ख़जाना है जो सीधे जिगर में चर्बी बनाते हैं। पांचवा कदम विटामिन ई। यूएसए में गाइडलाइंस कहती हैं कि नॉन डायबिटिक फैटी लिवर के मरीजों के लिए विटामिन ई फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। और एक बिल्कुल नई खबर, अगस्त 2025 में एफडीए ने सेमेग्लोटाइड यानी ओज़ेम्पिक को मैश के इलाज के लिए अप्रूव किया, और 2024 में पहली बार मैश की ख़ास दवाई रेसमेटिरोम मंजूर हुई। यानी तिब्बी साइंस आगे बढ़ रही है, लेकिन लाइफस्टाइल अब भी सबसे बेहतरीन इलाज है। मैं यूएसए में रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान में बसता है, और मैं जानता हूँ कि वहाँ फैटी लिवर के बारे में आगाही बहुत कम है। लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक तशवीशनाक हकीकत, पाकिस्तान में डायबिटीज़ के 58% मरीजों को फैटी लिवर है, मोटापे के 47% मरीजों को फैटी लिवर है, और आम आदमी में 30% लोग मुतासर हैं, लेकिन ज़्यादातर को पता ही नहीं। अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ है तो अभी इसका लिवर अल्ट्रासाउंड और एलएफटीज़ करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर है, अल्ट्रासाउंड और एलएफटीज़ करवाएं, वज़न कम करवाएं और सस्ते टेस्ट करवाएं। ये जान बचा सकते हैं। फैटी लिवर का सिरोसिस तक पहुंचना और फिर लिवर कैंसर तक, ये एक तवील मगर खामोश सफ़र है। इसे रोकने का सबसे बेहतरीन वक्त आज है, अभी। तो आज से एक काम करें, अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या मोटापा है, अपने डॉक्टर से लिवर अल्ट्रासाउंड का कहें, और अगर रिपोर्ट आने पर समझ ना आए तो कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ये चैनल सिर्फ आपकी सेहत के लिए है। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने किसी डायबिटिक या ओवरवेट घर वाले को ज़रूर भेजें, वो आपके शुक्रगुजार होंगे। और याद रखें, आपका जिगर ठीक हो सकता है, बस वक्त पर पता चलेगा। और सही कदम उठाएं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूट्यूब चैनल। आपकी बेहतर सेहत ही हमेशा मेरा मिशन है। खुदा हाफिज़। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine. तस्वुर कीजिए आप साइकिल से गिरें, ज़मीन पर ज़ोर से लगें, हड्डी टूट जाए लेकिन कोई दर्द महसूस ना हो, न स्वेलिंग, न चीख, न जिस्म की कोई वार्निंग। अब सोचें, आप गर्म चूल्हे को छू लें, जल्द या स्किन जल जाए लेकिन हाथ ना हटाएं क्योंकि दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। ये लगता है कि कोई सुपर पावर की कोई कहानी है, लेकिन हकीकत में ये एक नहायत ख़तरनाक मेडिकल कंडीशन है। मैं हूं डॉक्टर इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूएसए यूट्यूब चैनल। आज हम एक रेयर नायाब मेडिकल मिस्ट्री पर गुफ्तगू करेंगे, एक ऐसी बीमारी जहां इंसान दर्द महसूस नहीं करता है। इसे कहते हैं कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। दर्द की अहमियत क्या है? दर्द तकलीफ नहीं देता, ये हिफाजत करता है। ये जिस्म का अलार्म सिस्टम है। ये हमें रोकता है आग से, चोट लगने से, इन्फेक्शन से। बीमारी क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऐसे अफराद जिनके अंदर दर्द महसूस ना हो, वो टच तो महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, टेम्परेचर यानी गर्मी या सर्दी तो महसूस करते हैं, लेकिन दर्द नहीं। असल मसला क्या है? मसला नर्वस सिस्टम में होता है। आमतौर पर नोसिसेप्टर्स इंजरी डिटेक्ट करते हैं, सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, लेकिन सीआईपी में सिग्नल पाथवे नाकाम हो जाता है। जीन म्यूटेशन SCN9A
पेन ट्रांसमिशन को मुतासिर करता है। तो ज़िंदगी की हकीकत में क्या होता है कि ऐसे बच्चे अपनी ज़बान काट लेते हैं, होंठ ज़ख्मी कर लेते हैं, हड्डी तोड़ लेते हैं और रोते भी नहीं। तो खतरात क्या हैं इससे? रिपीटेड फ्रैक्चर्स, बर्न इंजरीज, अनट्रीटेड वुंड्स एंड जॉइंट डैमेज। अंदरूनी यानी इंटरनल बॉडी के खतरात क्या हैं? अपेंडिसाइटिस, इंटरनल ब्लीडिंग, सिवियर इन्फेक्शंस, ये सब खामोशी से बढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक। बचपन के मसाइल क्या होते हैं? सेल्फ इंजरी, डेंटल डैमेज, फिंगर इंजरीज और तवील लंबे असरात, जॉइंट की डिफॉर्मिटीज़, क्रॉनिक इन्फेक्शंस और चलने फिरने का और मोबिलिटी लॉस। इलाज इसका कोई क्योर मौजूद नहीं है। मैनेजमेंट में शामिल है प्रोटेक्शन, रेगुलर चेकअप्स एंड मॉनिटरिंग। तो हमें इससे सबक क्या मिला? दर्द आपका दुश्मन नहीं है, दर्द मुहाफिज है। क्या आप दर्द के बगैर ज़िंदगी चाहेंगे या ये बहुत ख़तरनाक होगा? कमेंट में बताएं। मैं हूं डॉक्टर इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूएसए यूट्यूब चैनल। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। आपकी बेहतर सेहत ही मेरा मिशन है। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine. तस्वुर कीजिए एक आम सा ब्लड टेस्ट किया जाता है, कोई खास मसला नहीं, बस रूटीन चेकअप। लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद लेबोरेटरी से डॉक्टर को फ़ोन आता है। वो कहते हैं, डॉक्टर कुछ गैर मामूली चीज़ हो रही है। पेशेंट का खून सुर्ख नहीं है, ये सब्ज़ यानी ग्रीन है। जी हाँ, ग्रीन, सब्ज़, न गहरा सुर्ख न भूरा बल्कि सब्ज़। मैं हूँ डॉक्टर इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूएसए चैनल। आज हम एक हकीकी मेडिकल मिस्ट्री पर गुफ्तगू करेंगे और ये बिल्कुल रियल है। एक ऐसी हालत जहां इंसानी खून सुर्ख के बजाय सब्ज यानी ग्रीन नजर आता है। ये साइंसी अफसाना या फिक्शन नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड मेडिकल फिनोमेनन है। आइए इसकी साइंसी रियलिटी को समझें। नॉर्मल खून की रंगत आम हालात में इंसानी खून सुर्ख होता है। ऑक्सीजन से भरपूर हो तो ब्राइट रेड और ऑक्सीजन कम हो तो डार्क रेड। ये रंगत आती है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो खून सुर्ख दिखाई देता है। तो अगर खून सब्ज हो जाए या ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन में केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई तब्दीली हुई है। खून ग्रीन कैसे होता है? कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं, खून ग्रीन नज़र आ सकता है। एक कंडीशन की वजह से जिसे हम कहते हैं सल्फ हीमोग्लोबिनीमिया। इसमें सल्फर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और जब ऐसा होता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मुतासर हो जाती है। नतीजा क्या होता है? खून का रंग सब्ज हो जाता है। ये अमल होता कैसे है? फिलहाल मैं बताता हूँ आपको। सल्फ हीमोग्लोबिनीमिया इस वक्त पैदा होता है जब सल्फर कंपाउंड्स जिसम में दाखिल होते हैं। ये आ सकते हैं सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से, एनवायरमेंटल एक्सपोजर या माहौलियाती तब्दीली की वजह से, या केमिकल इनटेक। मेडिकल लिटरेचर के मुताबिक मुमकिन ट्रिगर्स में शामिल हो सकते हैं सल्फर ड्रग्स, कुछ माइग्रेन की मेडिकेशंस, सर्टेन एंटीबायोटिक्स, सल्फर बेस्ड केमिकल्स। ये कंपाउंड्स हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं और एक दफ़ा सल्फर बाइंड हो जाए तो रंगत तब्दील हो जाती है। तो क्या सब्ज खून खतरनाक है? जी हाँ, लेकिन फौरी तौर पर जानलेवा नहीं होता। असल मसला यह है कि मॉडिफाइड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मौसर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। इसके नतीजे में फटीग यानी थकन, सांस की कमी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्किन डिस्कलरेशन और लो ऑक्सीजन लेवल्स यानी मरीज साइनोटिक भी नजर आ सकते हैं, यानी जल्द या स्किन नीली या सुरमई दिखाई दे सकती है। तो फिर इसको आप दीगर चीज़ों से कैसे फ़र्क करेंगे? क्या आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मेथ हीमोग्लोबिनीमिया जैसा है? नहीं, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया में खून चॉकलेट ब्राउन दिखाई देता है, जबकि सेल्फ हीमोग्लोबिनीमिया डिस्टिंक्ट सब्जी माइल्ड रंग पैदा करता है। और अहम बात यह है कि ये फौरी रिवर्सिबल नहीं होता। अफेक्टेड रेड सेल्स को कुदरती तौर पर रिप्लेस होना पड़ता है। तो ये कितना रेयर है, कितना नायाब है? इंतहाई नायाब। मैं 20 साल से अमेरिका में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे आज तक किसी लैब ने फ़ोन करके ये नहीं बताया कि पेशेंट का खून सब्ज हो गया। तो दुनिया भर में चंद डॉक्यूमेंटेड केसेस मौजूद हैं।
अक्सर मरीजों को खुद इल्म नहीं होता कि ये अक्सर रूटीन ब्लड टेस्टिंग के दौरान सामने आता है। मसलन प्री सर्जरी टेस्टिंग, जिसे सर्जिकल क्लियरेंस कहते हैं, प्रेगनेंसी के चेकअप्स, जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग। इसके अलामात या सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि ये नायाब है, लेकिन अलामात हो सकती हैं गैर मामूली थकन, सांस की कमी, जल्द की गैर मामूली रंगत, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, खास तौर पर लंग्स नॉर्मल हों लेकिन ऑक्सीजन रीडिंग कम हो। तो डायग्नोसिस कैसे किया जाए? भाई, एडवांस लेबोरेटरी एनालिसिस ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीमीटर्स हमेशा दुरुस्त नतीजा नहीं देते। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए सेल्फ हीमोग्लोबिन लेवल्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इलाज, इसका कोई फौरी एंटीडोट मौजूद नहीं है। मैनेजमेंट में शामिल होता है ट्रिगर को रोकना, सपोर्टिव केयर, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग। वक्त के साथ जिस्म के अंदर नए रेड ब्लड सेल बन जाते हैं और हालत बेहतर हो जाती। तो सबक क्या मिला हमें इससे? ये केस हमें याद दिलाता है कि मेडिकेशंस और कीमियाई एक्सपोजर कभी कभार गैर मुतवक्का फिजियोलॉजिकल तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं। हर कम ऑक्सीजन लंग डिजीज की वजह से नहीं होती, बाज़ औक़ात मसला खून में होता है। तो अब सवाल ये कि क्या आप जानते थे कि इंसानी खून ग्रीन भी हो सकता है? मेडिसिन हैरत अंगेज मिस्ट्रीज से भरी हुई है। अगर आप ऐसे हकीकी मेडिकल केसेस मजीद देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं डॉक्टर इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूएसए यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अपना बहुत ख्याल रखें। आपकी बेहतर सेहत ही मेरा मिशन है। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine. जब लोग जंग का लफ्ज़ सुनते हैं तो उनके जहन में मिसाइल, धुआं और गिरती हुई इमारतें आती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। कभी कभी एक मुल्क टूटना शुरू हो जाता है बम गिरने से पहले ही। कभी पहली चीज़ जो ख़त्म होती है वो इंसान नहीं होते, वो इस्तेहकाम होता है। फिर आमदनी, फिर सेहत का निज़ाम, फिर बचपन, फिर इज़्ज़त नफ्स या ऑनर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अरब स्प्रिंग के दौरान इजिप्ट में क्या हुआ। ये कहानी सियासत की नहीं है, ये किसी एक फरीक का साथ देने की भी नहीं है। ये कहानी एक आम इंसान की है। जब कोई मुल्क हिलता है तो सिर्फ हुकूमतें नहीं गिरती, जिंदगियां गिर जाती हैं। आइए मिलते हैं हसन से। हसन कोई लीडर नहीं है, कोई कारकुन नहीं है, वो सिर्फ एक आम आदमी है। वो काहिरा इजिप्ट में रहता है, एक छोटी सी वर्कशॉप में गाड़ियां ठीक करता है। इसकी बीवी घर संभालती है, बेटी स्कूल जाती है, बेटा गली में फुटबॉल खेलता है। उनकी ज़िंदगी सादा है लेकिन एक तरतीब है, ऑर्गेनाइजेशन है। सुबह की चाय, स्कूल की तैयारी, रोज़गार, थोड़ी सी बचत और एक चीज़ जो सबसे अहम है, उम्मीद यानी होप। लेकिन तारीख इजाज़त लेकर नहीं आती, वो ज़िंदगी बदल देती है। जनवरी 2011 लोग सड़कों पर निकल आए, लोग जमा हुए तहरीर स्क्वायर में। शुरू में हसन दूर से देखता है, वो सोचता है शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अदम इस्तेहकाम घर के अंदर दाखिल हो जाता है। सड़कें गैर महफूज हो जाती हैं, दुकानें जल्द बंद हो जाती हैं, वालिदैन बार बार बच्चों को फ़ोन करते हैं और फिर खौफ मामूल बन जाता है। फिर एक दिन आता है जब सब कुछ बदल जाता है। तसादुम होते हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। एक वाक़या बहुत मशहूर होता है, बैटल ऑफ कैमल। और हसन को एहसास होता है कि ये सिर्फ एहतजाज नहीं, ये ख़तरा है। अब तसव्वुर करें, इसकी बेटी पूछती है, अब्बू क्या मैं कल स्कूल जाऊं? और हसन खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। यही अदम इस्तेहकाम का पहला नुकसान है, आम जिंदगी खतरा बन जाती है। फिर आता है दूसरा मरहला, न बम न गोलियां, मईशत, इकोनॉमिक्स। टूरिज्म या सेहत कम हो जाती है, काम रुक जाता है, पैसा रुक जाता है और फिर ये सब हसन तक पहुंचता है। कम सयाह, कम टैक्सियाँ, कम गाड़ियाँ मुरम्मत के लिए और हसन की वर्कशॉप खाली हो जाती है। औजार वही हैं, दीवारें वही हैं, लेकिन काम नहीं है। ये दर्द मुख्तलिफ दर्द है। जिंदा हो मगर ज़िंदगी बिखर रही हो। आमदनी कम है, अखराजात वही। फिर फैसले शुरू हो जाते हैं, स्कूल की फ़ीस देनी है या खाना खाना है, दवाई या किराया चाहिए, बिजली या ईंधन। और यहाँ से सियासत बन जाती है बका इस जंग, बैटल ऑफ सर्वाइवल। फिर महंगाई आती है, इन्फ्लेशन, चीज़ें महंगी, पैसा कमज़ोर। हसन बाज़ार जाता है
और महसूस करता है कि अब वो पहले जैसा नहीं खरीद सकता। इसकी बीवी घर आती है कम सामान के साथ। बेटा कुछ मांगता है, वो कहता है बेटा अगले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं। और ये अल्फाज अंदर से तोड़ देते हैं एक बाप को। ये बम नहीं, लेकिन दर्द इतना ही गहरा है। फिर सेहत का निज़ाम, अस्पताल भर जाते हैं, दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं, सफ़र मुश्किल हो जाता है। लोग इलाज डिले कर देते हैं, चेकअप छोड़ देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सेहत का निज़ाम कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाता है। कोई बाप अपनी दवा छोड़ देता है, कोई माँ अपना खाना कम कर देती है, कोई मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं जाता। ये खामोश अमवात हैं, साइलेंट डेथ। कोई खबरें नहीं, लेकिन नुकसान हकीकी है। फिर आता है सबसे गहरा असर, ज़हनी दबाव या मेंटल स्ट्रेस। बच्चे सब महसूस करते हैं, वो खौफ से देखते हैं, वो तनाव महसूस करते हैं। जो बेटा खेलता था खामोश हो जाता है, जो बेटी ख्वाब देखती थी वो बका या सर्वाइवल के बारे में सोचती है। माँ राशन ज़ख़ीरा करना शुरू कर देती है, क्योंकि गैर यकीनी हालात यही सिखाते हैं। ये है अदम इस्तेहकाम का असर, इंस्टेबिलिटी। ये सिर्फ मुल्क नहीं, घर को बदल देता है। और सबसे मुश्किल बात है, जब हालात ठीक भी लगने लगें, तब भी सब कुछ ठीक नहीं होता। नुकसान बाकी रहता है, मईशत कमज़ोर, एतमाद टूटा हुआ, मुस्तकबिल अनसर्टन। और हसन जैसे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी एक लम्हा नहीं होता, ये एक तवील बीमारी होती है, लॉन्ग फिनोमेना। धमाका नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जवाल। और हसन सिर्फ मिस्र में नहीं है, वो हर जगह है, हर बाप, हर बेटे, हर माँ, हर बच्चे के अंदर, जो गैर यकीनी हालात में जी रहा है। तो जब हम कहते हैं जंग खतरनाक है, तो मुकम्मल सच कहना चाहिए। बम मारते तो हैं, लेकिन माशी तबाही, खौफ, तबाह सेहत का निज़ाम, तालीम का नुकसान और गैर यकीनी मुस्तकबिल भी उतना ही मारता है जितना कि एक बम। और ये कहानी इल्ज़ाम की नहीं, क्योंकि आखिर में इक़्तिदार बदलता रहता है, लेकिन आम इंसान सब कुछ खो देता है। दुकानदार गाहक खो देता है, बच्चा मामूल खो देता है, मरीज़ इलाज खो देता है, और ख़ानदान सुकून खो देता है। आखिर में एक मंज़र याद रखें, एक बाप अपनी वर्कशॉप में खड़ा है, ना ज़ख्मी ना मलबे के नीचे, बस खामोशी में, खाली काम के साथ, और एक ऐसे मुस्तकबिल के साथ जिसे वो अब वादा नहीं कर सकता। ये भी जंग है, और इसमें हमेशा इंसान सबसे ज़्यादा नुकसान उठाता है। आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूट्यूब चैनल। आपकी बेहतर सेहत ही मेरा मिशन है। आप सब हिफाजत से रहें। खुदा हाफिज़। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine. ज़रा तस्वुर करें, एक ताकतवर ज़लज़ला एक मुल्क को हिला देता है। चंद लम्हों में एक बहुत ही बड़ी सुनामी की लहर, जो इमारतों से भी ऊंची है, शहर की तरफ बढ़ती है। पूरे के पूरे शहर चंद सेकंड में गायब हो जाते हैं। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बिजली बनाने के लिए बनाया गया था, अचानक एक टाइम बॉम्ब बन जाता है। कोई धमाका नहीं, जैसे एटम बम की कोई आवाज़ नहीं, लेकिन एक खामोश खतरा शुरू हो जाता है, इनविजिबल रेडिएशन। ये कोई फिल्म नहीं है, ये सब हकीकत में हुआ था जापान में 2011 में। वो दिन जब सब कुछ बदल गया, मार्च 2011, 11 मार्च, जापान में 9.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जो दुनिया के सबसे ताकतवर ज़लज़लों में से एक था। लेकिन असल तबाही चंद मिनट बाद आई, एक बहुत बड़ी सुनामी, जिसकी लहरें 10 से 15 मीटर तक ऊंची थीं। साहिली शहरों से टकरा गईं, पूरा शहर ख़त्म हो गया। तकरीबन 20,000 लोग जान से गए, लाखों लोग बेघर हो गए। गाड़ियाँ, घर, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ समंदर में बह गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। साहिल के करीब मौजूद था न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका कंट्रोल ख़त्म हो गया था। ये था फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब ज़लज़ला आया, रिएक्टर खुद ब खुद बंद हो गए। ये एक सेफ्टी सिस्टम होता है, लेकिन रिएक्टर बंद होने के बाद भी गर्मी पैदा होती रहती है। इसको ठंडा रखना ज़रूरी है। फिर सुनामी आई, उसने पूरा प्लांट डुबो दिया। तबाह हो गए बैकअप जनरेटर्स, बिजली मुकम्मल बंद हो गई, बिजली के बगैर कूलिंग सिस्टम नाकाम हो गया। और असल तबाही यहाँ से शुरू हुई, रिएक्टर मेल्ट डाउन। रिएक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं फ्यूल रॉड्स,
जो कि अगर कूलिंग ना हो तो दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है और फ्यूल रॉड पिघलना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं मेल्ट डाउन। यानी फुकुशिमा में मेल्ट डाउन हो गए 3 रिएक्टर्स और हाइड्रोजन गैस जमा हो गई और इमारतों के अंदर धमाके हो गए। ये एटम बम जैसे धमाके नहीं थे, लेकिन उनमें से खतरनाक चीज़ बाहर निकली, जो है रेडिएशन, हवा और समंदर दोनों में। अब रेडिएशन का फैलाव खतरनाक है क्योंकि आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे सूंघ नहीं सकते और आप इसे फौरन महसूस नहीं कर सकते। फुकुशिमा के बाद हवा में फैले हुए रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स आलूदा पानी समुद्र में चले गए और दूसरे ममालिक में भी रेडिएशन डिटेक्ट हुई। ये एक जगह नहीं रहती, पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो लोगों को इवैक्यूएट किया गया जब रेडिएशन बढ़ना शुरू हो गई। हुकूमत ने बड़ा फैसला किया इवैक्यूएशन का। तो 1,60,000 से ज़ायद लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और 20 किलोमीटर का इलाका खाली करवा दिया गया। पूरे शहर सुनसान हो गए, अस्पताल खाली हो गए, बुज़ुर्ग मरीज़ मुतासिर हुए। रेडिएशन से बहुत से लोग मुतासिर हुए। ये लोग स्ट्रेस की वजह से मरे, खौफ और बेघर होने की वजह से नहीं। तो शहर का क्या हुआ? ये वो हकीकत है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ये हादसा चंद दिनों में ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सालों तक जारी रहा। तबाह हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें टूट गईं, बिजली ख़त्म, पानी का निज़ाम ख़राब, इकॉनमी ख़राब हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं और जापान की कार इंडस्ट्री भी मुतासिर हुई और ग्लोबल चेन सप्लाई भी मुतासिर हुई, जिसकी वजह से दुनिया भर में गाड़ियों की पैदावार कम हो गई और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी अफेक्टेड हुई। अब इंसानी सेहत पर क्या असरात हुए? रेडिएशन के शॉर्ट टर्म असर क्या होता है? मतली यानी नौजिया, कमज़ोरी, जल्द को नुकसान और लॉन्ग टर्म कैंसर का खतरा, थायराइड डिजीज़, जेनेटिक म्यूटेशंस। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि रेडिएशन के फ़ौरन बाद अमवात बहुत कम हुई, लेकिन मॉनिटरिंग आज भी जारी है। रेडिएशन का खौफ आज भी लोगों के ज़हनों में है। ये वो एंगल है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। लोगों ने खो दिए अपने घर, अपनी नौकरियां, अपनी कम्युनिटी, ख़ानदान अलग हो गए, बच्चे खौफ में बड़े हुए। आज भी कुछ लोग वापस नहीं जाना चाहते। रेडिएशन का खौफ आज भी मौजूद है। अब आज की सूरत हाल 10 से 15 साल हो गए इस बात को, लेकिन अब भी क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 40 साल तक लग सकते हैं। रेडियोएक्टिव फ्यूल अभी भी मौजूद है। कुछ शहर दोबारा आबाद हो गए, लेकिन कई इलाके अब भी खाली हैं। हज़ारों लोग वापस नहीं आए और फुकुशिमा आज भी मुकम्मल नॉर्मल नहीं हुआ। अब अगर आज हमला हो जाए, आप तसव्वुर करें अगर सुनामी की जगह किसी ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया तो क्या होगा? कूलिंग सिस्टम तबाह, मेल्ट डाउन शुरू, रेडिएशन खारिज। फुकुशिमा जैसा ही, लेकिन ज़्यादा तेज़ी के साथ। और नतीजा क्या होगा? मैस इवैक्यूएशन, रहने के काबिल ना रहने वाले इलाके, एनवायरमेंटल डिज़ास्टर। तो एटम बम चंद सेकंड में तबाही लाता है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट का हादसा आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से दहाइयों तक तबाही फैलाता है। फुकुशिमा हमें एक बात सिखाता है, असल ख़तरा हमेशा धमाका नहीं होता, बल्कि वो होता है जो इसके बाद होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग इस हकीकत को समझें तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगाही ज़िंदगी बचा सकती है। मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूट्यूब चैनल। आपकी बेहतर सेहत ही मेरा मिशन है। गुड लक एंड गुड बाय। तो जी मैं आज जा रहा हूँ एक फायर लेफ्टिनेंट से मिलने के लिए। मैं आपको पूरा टूर कराऊंगा फायर स्टेशन का भी, कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितनी लंबी शिफ्ट होती है, क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं उनकी फायर फाइटर्स की बनने के लिए, उनकी सैलरी क्या है और क्या उनके पर्क्स होते हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, और इसके अलावा किस तरह की फायर्स होती हैं, कैसे उनको बुझाया जाता है, ट्रक किस तरह के होते हैं, फायर हाइड्रेंट जो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पानी ख़त्म हो गया तो आपने हाइड्रेंट से पाइप कनेक्ट किया ट्रक का और वहीं से उसको रीफ़िल भी कर लिया और फिर आग बुझाते रहे और जहाँ जहाँ जाना है आपने। तो ये पूरा एक जाल बिछा हुआ है इन चीज़ों का इस मुल्क के अंदर, और इससे मालूम होता है कि कितनी अहम चीज़ है ये, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ज़ाहिर बात है कि किसी बिल्डिंग जब बन जाती है, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो घर हो, कुछ भी हो, उसको फायर वाले आके पहले उसको अप्रूव करते हैं
अगर वो अप्रूव ना करे तो आप उसकी पोजेसन नहीं ले सकते, चाहे वो आपकी दुकान हो, चाहे आपका वो घर हो, चाहे आपकी वो बिल्डिंग हो। जैसे मेरी क्लिनिक है, मेरे क्लिनिक के अंदर दो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, एग्जिट साइन है फ्रंट और बैक पे, ताकि लोगों को नज़र आता रहे कि भाई निकलना कहाँ से, अगर कुछ होता है। इमरजेंसी लाइट्स हैं, जब अंधेरा हो जाए तो वो लाइट्स टर्न ऑन हो जाती हैं, ताकि आपको मालूम हो कि कहाँ जाना है, एग्ज़िट कहाँ पे है। और हर साल फायर डिपार्टमेंट से एक बंदा आके मेरे फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करता है कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, आपको चलाना आता है, और ये कहाँ विजिबल जगह पे लगा हुआ है कि कहीं छुपा हुआ है कि पता नहीं रखा हुआ कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू फायर फाइटिंग and to stop the fire from spreading. So stay tuned, we'll show you more and we'll take you there. I'm here today with a lieutenant of fire department. They've been gracious enough to give us some time. Lieutenant, how are you, sir? I'm good. Thank you for having me. Thank you very much for your time. Please, can you introduce yourself and explain to us what's your capacity here and how long you've been working for the fire department? Absolutely. So my name is Mike Danner. I'm the current lieutenant of the fire marshal's office. Within the fire marshal's office, we're in charge of many different things. We do plan reviews for new construction and remodel of current construction. We do life safety classes, fire extinguisher classes, pretty much any fire safety you can think of. We do a lot of hands-on teaching with that. Something else that we handle as well is fire investigations too. So when a fire does occur, we'll go out and we're detectives for the fire department. We try to figure out where it started, why it started, was it an accident, was it some sort of failure of a device, or if it was arson related as well. So within our fire marshal's office, there's 8 of us. The fire marshal is the top, and then I is the lieutenant, and then there's 6 inspector investigators underneath us. Out of all of us, 2 of us, myself and 1 other investigator, are law enforcement certified as well. So we're kind of firefighters and cops all mixed into one. Nice. But that allows us to, if there is an arson case, we can handle it internally, bring that through the DA's office and the court system, and kind of take care of that as well. Nice. I've been in the department for about 15 years now. That's a long time. So yeah, I've been going at it for a while. You have seen everything and whatever scenario is possible, I believe. Pretty close, you'd think. Obviously we see everything from the easy calls to the worst of the worst, and we'd rather see more of the easy calls. Right. But we're here to help in any capacity that we can. And guys, this is what it is. I mean, they have to be prepared for any kind of emergency. I mean, road accidents, fires, earthquakes, floods. I mean, you guys are there for anything and everything, pretty much. Oh, absolutely. First responders. There's times that they call us because they don't know who to call, and then when we show up, we're like, yeah, we'll figure out who to call. So I'm a physician, as you guys know. So several times in my clinic there have been emergencies, and obviously we are a clinic, not an ER, so we have to call. If I anticipate something is going bad with the patient and patient may collapse very quickly, we call 911, and the first people usually who respond right away are the fire department, and then the ambulance and the cops. So yeah, whoever can get there and save a life, that's what matters. Absolutely. Most people think of, when they hear the word fire, they think it's just flames, but I'm sure there's a lot more to it, right? Oxygen, fuel, ventilation, all that. So what do you think a fire is, or a blaze, or what is a bad fire? What category or levels? So when you think of fire, when you're trying to break it down, and kind of easy way to explain it is fire needs 3 things to survive. It needs a fuel source, a heat source, and then a fresh air source, so oxygen. You take any one of those away and the fire will eventually go out.
So fires like us, it needs air to survive. So if we're talking something like a stovetop fire where you're cooking dinner or something like that, your pot catches on fire, doing the simple act of just putting a lid on it, you're essentially smothering the fire, you're choking it out, you're taking away that oxygen source, so it's going to put itself out. If it runs out of fuel, so like if you have a fire in a trash can but there's nothing else around it, once the fire burns through all the available fuel in the trash can, it's going to put itself out. And then the heat source. So again, back to kind of like the cooking fire, if you remove that pot from the heat source, which is the stove, whether that's the open flame or the electrical stovetop or something like that, it's going to eventually put itself out because it's not constantly getting heated from that source. So basically, out of those three things, if you remove as much as the triggering factors, it will die down. Yeah, any one of them, if you remove any one of the three, fire will go out eventually on its own. Now, eventually might mean a couple seconds, it could mean a few minutes. So there's definitely other steps you want to take to help mitigate And that. guys, that might be the difference between the life and death, because fire, that's not only the fire that kills, I think the smoke. Absolutely. I'd say the majority, as far as here in Las Cruces, fire fatalities that we've seen and stuff like that, the majority is going to be from smoke inhalation than it is from direct fire on the victims themselves. Smoke is just made up of nothing but superheated toxic gas. So it's not like the movies, it's not like TV where, you can just cover your mouth with a shirt or something like that and make it out. Something as simple as one deep breath of that nasty toxic smoke, and it's going to put you out. You guys are the first responders. There's fire, you pull somebody out of the fire, they're not breathing, you are equipped with every kind of medical, CPR and all that you can do at that time till the actual medical personnel arrive, where you guys are fully equipped and ready to take care of that. We're the same level as like if the ambulance showed up or anything like that. Everybody that's sworn personnel for Las Cruces Fire Department are all licensed EMTs. There's 3 different levels: basic, intermediate, and paramedic. So we all have the range to be able to not only take you out of the structure, but we'll be able to assess and treat you right there, and then get you to the appropriate medical facility, whichever, So you have to be an EMT in order to be a firefighter. You have to be an EMT. Yes, so it depends on the academy we're running at the time. When I got into the department, I got my EMT license as a part of my academy setting, but we also run academy sometimes where having that EMT license is a prerequisite to get into the academy. So it just kind of depends on what's going on at the time and what the need is. So what is a flashover? I've heard this term many times. So what does that mean actually? So flashover is a term that's used when, say, we're inside of a house, inside of a room, and the fire has grown to the point where every object in that room, the furniture, the walls, the ceiling, the carpet on the floor, everything has reached its ignition point. So it's so hot in that room that literally everything, wall to wall, floor to ceiling, has caught fire at that point. Flashover is a very bad thing for anyone, even ourselves included. Firefighters fully geared up and everything. Our gear and our training is not necessarily built to withstand being in a room when a flashover occurs. We're talking you have seconds to get out if you were in a room when flashover happens. The way stuff is built nowadays, it's nice, it's very stylish and comfortable and everything, but everything is built lighter with synthetic materials and highly combustible stuff. So flashover can occur anywhere between 3 to 5 minutes after a fire starts in your home. And coincidentally, that's roughly about the same time frame that it takes for us to get there on scene. Our average response time, I'd say, for the most part within the city, is about
5 minutes Okay. to get on scene. So we're going to get there quick. Obviously, if it's an emergency, those 5 minutes can seem like 5 hours to Right, you if you're right. the one Oh, having the yeah. emergency. But when we get there, we're right around that time where that flashover is either going to occur or just occurred. So definitely something that we try to avoid. So explain to me, please, also about level 1, level 2, level 3 fires. I have heard a lot about that. I guess you guys don't go with that kind of classifications here in U.S.? Right. Well, I don't know necessarily the entire U.S. Every department within the U.S. might be a little different, just with terminology-wise. We don't rate fires like that. Maybe the closest thing that I could think of for our department is how many alarms the fire is. So if it's just a single alarm fire, that means you're just getting the standard response, which is 4 engines, 2 of our trucks, a couple other specialized units. And if someone on the fire ground requests central dispatch to strike a higher alarm, strike a second alarm, then they're going to get additional units, meaning essentially like the fire's big enough or enough is going on where there's like multiple victims or something like that, where we need more personnel here to help handle it. So if we strike a second alarm or if we strike a third alarm, we're just throwing more resources at that event. I see. So basically, the word alarm is kind of pretty much goes with, if you replace the word levels. Potentially, yes. Same thing yes. as that, and depends on, okay, we have a 3-alarm fire here. So Right, then so you know there's what to a dispatch. lot of people are going on. Okay, so. and that's the highest level, 3 alarms? It's few and far between, and we like to keep it that way that we get to that level. It's not uncommon for us to strike a second alarm, just because we're a smaller department. Yeah. So we get just a couple extra resources Yeah. to make sure, because you always want to have enough resources to not only attack and mitigate the situation, but you want to have a couple of apparatus in reserves just in case you're So it ready means to go. that since this is New Mexico, a smaller city of New Mexico, versus a fire department in LA or New York or Right. Chicago, because of the densely populated urban areas and bigger population, millions of people there. So the resources and the levels, go further beyond that depending on Absolutely. So the population. Yeah, so you look at like New York or LA, I mean, you're talking over 100 guys at every fire scene, easily. On average for us, we handle fire scenes with 20 to 30 firefighters. Pretty, it might sound small, but we're actually, we take a lot of pride in how much training we do, how much preparedness, just how much preparedness goes into every fire, every situation. Well, we all saw that heroism and your dedication, because when 9/11 happened, there was a tough time for our country, and the way the first responders and the firefighters that jumped in that building when everybody was leaving and they were going in, knowing that this thing might collapse anytime, that speaks volumes of your dedication and your hard work and your commitment to your job. And unfortunately, a lot of our firefighters lost their lives. We deeply condole with the family, our condolences, but we can't thank enough for your services and what you do for the community and for the nation. Oh, we always appreciate that. Well, we appreciate that too, and you guys are our heroes. Absolutely. Please tell me, how many firefighters are, present at one given point in time on a fire station, plus what is their qualification and criteria to be a firefighter? So right now in town, in Las Cruces, we have 8 stations. We're in the middle of building our 9th station. And at every station, it kind of depends, because some stations only have 1 engine. Some might have an engine and a truck. We also have what's called a rescue, which is like our version of an ambulance. Looks like an ambulance, just has our logos on it. And excuse me, when you said engine and a truck, so what is the difference between an engine and a truck? So your engine, this is what we're standing in front of right now. Your engine's going to have all of the hose lines, all the attack lines. So we're going to be pulling the lines into the fire, into the structure to be able to put that fire out. You're going to have a water tank inside of the engine that we can work off of before we hook up to a fire hydrant and supply that line. And then your trucks or aerial apparatus are going to have large ladders on the top
that are 100-foot ladders, and they also have a giant nozzle where the basket is at I the see. end. So we can put So those are snorkels, basically. larger, much larger fires, so you need a lot of Got water. it. Those can put thousands and thousands of gallons per minute onto those fires. So. Got it. And so you were telling us about how many firefighters are in the Yeah, station. so with our engines and our trucks, you're probably looking at 3 to 4 firemen per unit. 4 is ideal. Sometimes staffing, guys call out sick or whatever. So we try not to drop, well, we can't drop below 3 per crew. So 5 would be, amazing. And sometimes we have that when everybody's at work and, we have actually, maybe a fresh academy that came online, so we're almost a little overstaffed. But 4 is the goal. I see. And then with our rescues, those are 2-man units. You have obviously your driver and then the person that's going to be in the back assessing, dealing with the patient. So it just depends. If it's a 1-company station, then you're going to have 4 or 5 people there. If it's a 2-company station, Got it. 6 to 8 guys there, just depending. So. Perfect. And what is the qualification for somebody who wants to be? Because I've seen little kids, they aspire to become firefighters. For them, you absolutely. guys are Batman and Superman and everything in between. So what are the qualifications for somebody who wants to be a firefighter? What they should be looking at? So it's a multi-step process. The cool thing is you don't have to have any knowledge about firefighting before you come into the fire department. Before I was a firefighter, I was actually a teacher. My degree is in music, so complete different shift for me coming into this Couldn't imagine profession. that, So yeah. just wanted to have something different and got into it. But the first step is a written exam, just a general aptitude test. They're looking for general knowledge, see how you operate in different situations. Then if you get a passing grade on that written test, you move forward to a physical agility test, and you do 9 different events, and that's like dragging hose, using the different tools, climbing 3 flights of stairs, dragging a dummy that's simulating rescuing a person, all kinds of different things. You have to do those 9 events in just shy of 7 minutes. And if you pass that, you move on to the next round, which is an oral interview. And usually it's a few of the different chiefs, the fire chief, maybe a deputy chief, the academy coordinator, and they're asking you questions like, why do you want to be a firefighter? Okay. Why did you choose our department? What do you have that you can bring to the table? And then, you get through all the extra, like background check, all Right, the all little that is tiny important. things. And if you make it into the academy's anywhere from 16 to 20 weeks, just depending on if you're getting your EMT license in there as well, or if you're pre-certified. So you're looking 4 to 5 months of training, 5 days a week, 8 to 5. And we're just going at it every single day. And then once you graduate, you have a year of probationary time, Right. where you do a couple different stations and you're getting evaluated on all your functions and everything. And even after that, with me being 15 years in, every year we have to take that annual physical agility test and make sure that we're still up to the level of being able to, because the last thing you want, if you're calling in an emergency and and we show up and we're out of breath or out of shape. And we are doing the CPR on you. Yeah. So we want to make sure that we're in the best shape that we can be in to help you out in your time of need. So. Totally makes sense. So what is the typical salary of an entry-level firefighter versus as they graduate and become seniors? Because obviously everybody has to support their family. And, absolutely. And this is a noble profession, working to save lives, plus supporting their family. So what is the level of as they graduate above? So certain coming into the department, brand new probationary firefighter, you're looking at about $45,000 a year. Okay. Every little step, once you come off of probation, it's an increase. If you start out as a basic EMT, but you increase your license level, that will add to your salary as well. Myself being a law enforcement certified officer, that increased my salary as well. The steps would be firefighters, the basic level, and then you jump up to either driver operator if you're staying on the engines, or on our side of the house,
it's inspector investigator. So those are kind of the next step up. And then above that is lieutenant, where I am at right now. And then the next is battalion chief, deputy chief, all the way up to the fire chief. Now, you know, it ranges. It depends on your rank, how many years you've been in, stuff like that. Obviously. So me being 15 years in, lieutenant, with my law enforcement, you're looking at about just shy of $100,000 a year. Fire chief, you can get all the way up to the 130s, 140s. For us, Well, every department's a little like different. any other so. profession in the world, you know, the more experience you have under your belt. Oh, absolutely. And you know, and more qualifications, that's how you're compensated. But again, what you guys do, putting a price tag on it, is not possible. I don't mean, think you know, anybody. you know, police, army, you guys Right. are just, you know, they're selfless devotion. I don't think anybody really You know. signed up to try to get rich being a fireman. Well, so. no, this is we really have you know, we just really love the fact that you guys are selfless people, and you're just there to help people, and you know, that's what matters. We're here trying our best for you. So. Great. So, Lieutenant, please tell us, what is the ideal response time by the time you get a 911 call, and then in a densely populated urban area, what is your response time? What are the factors that can delay your response, like traffic congestion or wrong address or whatever the case may be? Sure. So ideally, we'd like to get anywhere between, I'd say, 5 to 7 minutes if we're running with our lights and sirens on. Not all emergency calls come in warrant having our lights and sirens on, so it might take a little longer. We just go like it's a regular drive. So those would definitely be responses that are non-life threatening. But if we're wanting to get there, absolutely there's times where, you know, there's traffic, depends on the time of day. If it's in the morning when everybody's going to work and school, or in the afternoon when everybody's getting picked up, lunchtime, rush hour, that type of stuff. Really, we want to educate the public as much as possible that if you see or you hear emergency vehicles coming your way, or if you see them in the rearview mirror, pull off to the right. That's kind of universal wherever you go, or should be at least. Don't just come to a dead stop in the middle of the road. Pull off to the side, to the right, let us get around. You know, there are times where it gets so congested that we end up having to take on oncoming traffic just because we have to get there. It's a very, very real emergency, you know. But we just want to make sure that we're all doing it safely, Right. because obviously the ultimate goal is not only for us to help you out, but to get to and from the call safely ourselves. So. Perfect. Let me tell you a story here a little bit real quickly. I have a Hummer, and I had a Hummer, and I bought another one, Hummer H1. It's an army vehicle made for civilians. I was off-roading in my Hummer, and then when I parked it right next to my house, like outside my garage, my son says, "Dad, I smell barbecue." And I said, "Barbecue?" And it was a little windy. And I said, "There's no barbecue." I came out, and I smelled something burning, and I said, "Maybe the Hummer is overheating." Right. And so I was, okay, let me go get some water, and when it cools down, I'll put some water in there. Then while I was thinking that, there was a psst sound, and I saw a little small 1-inch flames like on a grill, and because the Hummer has a little grill thing on the front, not to barbecue, but I don't know why they put that, maybe for ventilation. So while I was thinking what's happening, those flames became at least 6 inches. And then I said, well, this is something crazy going on, and this could just burn the whole house down. I called 911. I think you were the one, I think, later on also. I did come out to investigate your because fire. when I saw him, I said, well, I remember you. And he said, yeah, you have a Hummer that burned down? So yeah, they were there. They blocked off the whole area because our neighborhood, all residential areas, they were just there, and they doused the fire, and he was just there timely and saved our lives. And you know, we always want to emphasize too, like, it doesn't matter how big or small the emergency you might think it is. If it's an emergency to you, that's all that needs to matter, because you can call 911 if you feel like it's bigger than what you can handle. Yeah. It's not on us to judge why you called us. All we know is you are not having a good time right now. Oh, you need somebody to come and help, and we're there to help. And as best on we top can. of that, because I watch too many movies. In the movies, you see the car's on fire, and then it goes like you're waiting 100, for the explosion. 100 feet high, and then it falls down again on somebody's house. Right.
But I don't think in real life that happens, that the car can just blow up and Definitely go up like not. that. I mean, there's definitely some. That's what I was instances- thinking. Right. There's some instances that maybe that could set little things off like that, but Because when I called normally 911, not. when I called 911, the person was taking my information. Okay, what's your name? Okay, what's the address? I said, can you just pull up the address from my name? I mean, just send somebody and calm down, calm down. Right, I said, right. "Oh." But again, this was just a panic situation. So, Lieutenant, one of the main reasons I wanted to talk to you about is to, first of all, create awareness. Can't stress enough how important it is for people to know about the fire safety and the common sense stuff that needs to be done at that time. I'm originally from Pakistan. I was born and raised here, moved to this country in 2000, year Okay. 2000. And it's been like almost 26 years. This is my homeland. I love this country, great people, great respect for this nation. Now, but again, my birthplace is Pakistan, and recently there was an incident in my city where I'm from, called Karachi. Okay. And that's a seaport city. There was a shopping center called Gul Plaza. And I've been to that shopping center several times. It was a lot of nice stuff there. Anyways, the point is, it was a 3-story building. It all burned down. People, almost 70, 80 people died, and to the point they couldn't even find their bodies and could use the dental records to identify them. One of the reasons was to interview, to get your opinion about buildings like that, like shopping plazas, okay? What kind of challenges those have when it comes to a huge fire? How much time is needed to evacuate people? What are the challenges you have, meaning locked doors or exits or barricades there? What I heard in the news that people could not get out on time because, first of all, there were more shops than were approved. Okay. And, they built more up there, which was obviously not the right thing to do. Plus, the doors was locked. There was no electricity. The emergency lights were not there, so people couldn't find their way out. So in your situation like that, in the situations like that, what, say, if you were the chief there, what would have been your response, or how would you have handled it differently? So something that we do as a fire marshal's office is annual fire inspections of businesses. I'm sure we've come to visit you a couple times. So Yes. and we want to make sure that everything is up to code. We operate off of the International Fire Code, and it gets updated every 3 years. But really, any major changes that come to it, there's a phrase that's used that the fire code is written in blood. And what that usually means is there was some sort of major tragic event that happened that the industry needed to step back and say, okay, why did that happen? Why did we lose so many lives, or why was there so large of a loss? And what can we implement that will stop that and avoid that in the future? So that's where, things like, honestly, if you had a 3-story mall structure built here in Las Cruces today, it would have things like multiple egress points with doors. You would have emergency lighting. You would have a full sprinkler system throughout the entire building, alarm system, voice activation, evacuation. And then obviously, like you had mentioned, there was more stores than were approved. Yeah. That's something that we try to stay on top of too, making sure It doesn't block the exit. what or it says passages is going to be there is actually there, nothing more, nothing less, that type of thing. Right. Because we understand, people, when they move in, it's just like our homes. You move in and you might have this amount of stuff, but over years you start to accumulate. Yes. So we want to make sure it's neat, it's tidy, it's orderly, Right. It's fire safe, that we're not just creating this massive fire load and this this potential for bad things to happen. So as far as how we would attack it, we're fortunate in Las Cruces. We have a very, very good water system. So hydrants are spaced pretty close together. We don't have to travel hundreds of yards or anything like that to find the nearest hydrant. And can you please explain what a hydrant is? So your fire hydrant, it's going to stick out of the ground a couple feet.
Yeah. And that's what we hook into, actually right next to what you're standing. Right there. We're going to hook from the fire hydrant, we're going to hook a hose into the engine. So basically, hydrant is just a connection, a reservoir of water. To your city's water system. Yeah. Yes. So you don't have to carry too much. You can just Right. plug it in and then. So you know. when we show up, that 500, 750 gallons of water that I was telling you about, depending on what apparatus it is, we're going to use that when we first get on scene. But while we're using that, the driver is going to hook up into the closest hydrant, and then we're going to supplement that water supply. Okay. And so that's one of the things that since I grew up in Pakistan, Karachi, Pakistan, I've never seen a fire hydrant, what it looked like, what that it meant. But since I moved to US, there are fire lanes where you cannot park the Right. car. You cannot block the fire hydrant. If you are, your car will be towed away so quickly that you won't even believe. And then, it's every so often or so much, like, what's the distance in between each fire hydrant? So it depends on the type of area it's in. Usually in your residential neighborhoods, you'll actually see one every maybe 300 to 500 feet, depending on the layout. So you should be able to stand somewhere on the street and look one way or another and be able to see one. Yes, I see that all the time. Yeah. Great. And so in that place like a mall where there's a huge fire, what are the standard operating procedures to rescue the trapped people? So unfortunately, there's no one exact answer that's going to fit for every situation. But depending on the layout and stuff, how close they are to the fire. So say you're trapped, but you're not necessarily right next to the fire. We might have you shelter in place. We teach people, in their homes to close the door to their bedroom if they can't get out. Stuff sheets, blankets, whatever, at the little crack at the bottom of the door, and just kind of wait in your room next to a window until you hear us on scene. The same thing applies to those types of structures where if you have the distance or you can create distance between you and the fire, but you can't necessarily get outside, try to block yourself off where you're not having a bunch of fresh air getting into your space, because again, you don't want to breathe that nasty smoke in, very highly toxic. Just being aware of your surroundings, really. So things like going to a mall or going to hotels or the movie theater, we're very much creatures of habit, where when we enter into a structure, most of the time we're going to leave from that same door. But you don't realize that something like a movie theater, everybody enters from the back and works their way down. There's more than likely 2 exits at the base of the theater that you can leave from. Yes. So just being aware of those surroundings and noticing, like, hey, if I need to get out of here, I have an exit that way, I have an exit this way, just seeing what's going on. Got it. Perfect. So, Lieutenant, what types of fires are difficult to control? Like electrical, chemical, just fire in a trash or something? Or So it kind of depends on where it's occurring. If it's inside a structure, outside a structure. Definitely chemical fires would be one that we would have to spend a little bit more time thinking how we're attacking it, just because certain chemicals and certain objects don't react with water very well. You might get a small explosion, honestly, or just mixing water with whatever chemical might be hazardous. So we have specialized units that can help with that. We have a hazmat unit that can go in and see, what type of chemicals we're working with, what we should use to attack that fire, or mitigate that situation. Got it. First of all, what does it cost to have a truck like this? So nowadays, for a brand new engine to come out, you're looking roughly about $1.5 million. So I'll share my Ferrari for you. This one. I'm in. Let's go. Well, I don't have this truck. Well, wow. So look at this. It's crazy amount of valves, and it says cross sleigh, there's passenger side discharge. So tell me about some of these important valves real quick. So this is known as our driver panel.
So whoever drives the engine is in charge of the pump panel and everything, because every single one of these valves is going to run to a different hose that's on the engine. So the crosslays are actually these two here. Number one crosslay is coming off one way, number two is going off the other way. So we have to make sure, because each hose is set up to where you want to put a certain amount of pressure into it. You don't want to over pressurize it where it would pop the hose, or under pressurize it where you're attacking a fire with like a little tiny garden hose. We want to make sure we have enough water. So they all go to different areas. This big intake here, we talked about it earlier. When we're hooking up from the fire hydrant, we're going to use our 5-inch hose to plug into here, and this is what's supplying us with all the water. I've seen people like this pressure is so much that if somebody who is not trained holding it, they will just be flying with it. So You know, not as crazy as the movies, like Yeah. going off the ground and Or like stuff. we tie and But it definitely can knock you over. They're powerful hose lines, especially some of the larger ones. We require at least 2 guys to be on the hose line, because it's just so much pressure for one person to not only hold it, but they have to be able to advance with it and maneuver with it. So what's the most important valve in this thing? I'm sure all of these are important, otherwise it won't be there. But this land for the So hydrant. And definitely, yeah, we want to be able, because if we don't have any water, we can't put out the fire, right? So having a good working intake is this going is to, how you release the pressure from that. yeah, so you're going to plug it in there, and then when you open this valve, it's going to finally let the tank refill. So again, it just depends on what we're looking at. Tiny crosslays all the way to this one, which is the deck gun, which is right on top. It's a little harder to see. Gun up there, huh? So all the way on top, that's our deck gun that can put out close to 1,500 gallons per minute. So Okay. And so what are these? I'm sure these open. So what are So every little compartment that we have, we'll get in there, is going to be outfitted with the same, like, I guess, category of equipment, if you will. So this is our driver's compartment. So everything that our driver might need to operate the pump panel, or just his gear. He has his helmet in here. He has his bunker gear in here. But then you're going to have all these extra connections that are going to have to do with the hose lines and with firefighting. This right here, this yellow hose, is the 5-inch hose that we're going to hook up from the fire hydrant to the intake there. So we're doing that. A little smaller 3-inch hose in there as well that we can hook up from apparatus to apparatus if we need to. So all of his tools are going to be in here ready to go. See that? You can absolutely see that. Look at that, guys. This is a firefighting helmet. And it's pretty heavy, and this is how it goes. Yes. So a lot of people, the way you were going to put it on with the bill in the front, like, we're used to that, right? Yeah. So it's a very common misconception, but having it off the back is so when the water hits us, it's actually going off instead of just like down the back. Made of like metal, huh? This one, it's going to be a composite material. There are some like traditional helmets that are made out of leather. Ours are going to be, just a composite material, but it's all fire rated too, Nomex and stuff like that. And then ours actually have built-in visors as well. So when we're doing extrication at a car accident or something like that, we have some eye protection in there as well. Perfect. And then the hose. Okay, let's move on with the so this so basically all these are like like shelves and shutters. Yes, absolutely. So our next one is going to be like all of our tools in here. We have axes, Halligans, pry bars, all kinds of stuff that we need. So Okay, and these are just to break whatever, and the X there, and then this is just to pry things up. yeah, so this is our Halligan tool. So we use this to, if we're forcing doors, or sometimes if we're in a mobile home, we'll actually use it, slam it into the ground and up against the wall to use it as almost like an extra step to get into a higher window. So definitely many reasons to use all the different tools. So. Nice. What's in there? Very next one that we have. So up top we have our air tanks that we wear when we go inside the fire, our SCBAs.
And it's just regular air, it's not oxygen tanks or anything like that. And then just some different equipment. We have some chocks in the back, so if we need to stabilize a vehicle during a car accident, some cones that we can put out. Just these are called Rescue 42, so help brace vehicles as well. Great. And then, so here, so I see a lot of hoses folded up onto. Right. What's the actual length of all these combined, or they can all be connected together? Not all together. So the ones up top, the yellow ones up top, are the ones again that we'd hook into the fire hydrants, into the apparatus. But those would be if the hydrants are further away. So we carry, I believe, anywhere from 600 to 800 feet, depending on what apparatus it is, because different areas of town, hydrants are spaced a little differently. So sometimes we carry a little bit more. But then these other compartments, we're gonna have ladders inside. We have our 24-foot extension ladders, our roof ladders, and then underneath here we have some kite poles that we use to, if we're inside of a house, we can use this to kind of poke holes in the ceiling to check to see if the fire has extended at all. So many compartments here. oh, absolutely. And then what is that in there? There's just like so it's, guys, fire truck is just not, they don't look cool. They look at the capacity of not even taking water with them. Besides that, bunch of tools that you need. It's not like, hey, I forgot my hammer. Let me go back and get it. Yeah, there. So in here we have some tarp covers, just so when we're fighting fires, if we don't, if we know we're gonna have to tear the ceiling down or something like that, we might lay the tarps over your furniture, over electronics, stuff like that, so we don't damage more than we need to. Well, so see, I mean, when fire people come in, they also make sure that they don't have to create available damage if they don't have to. Absolutely. Obviously, you're like number one priority, but they can save their stuff if they can. On the other side, we have 2 more packs for 2 other firefighters. Look at that. And then that thing, that's so like to cut some kind of a. So these are our tools for extrication. These are our cutters. Behind those are called spreaders or the jaws of life. You hear that term a lot. Yeah. So those can spread, pinch, do all kinds of stuff. What do you use to cut that, like killers or something? So vehicles, actually. So if it's mangled from an accident and we can't just open the door to get you out, we might need to cut the roof off of it, cut the door off of it. We do a lot of training with that as well. So How heavy is that gonna pick up? oh, absolutely. You can pick the cutters up there. About 75 pounds or so. Look at the claw. This is like a crab, but this is heavy and dang, I'm out of shape, man. I need to join your academy. Yeah, come sign up. We'll take care of you. So our next compartment is just our extinguishers. We have different extinguishers, water can, and then an extra oxygen tank just for medical stuff. So depending on the medical call, we could go through a bottle pretty quickly. Yeah. And then speaking of medical, this is our medical compartment. Everything from your regular bandages, stuff like that, to medications, IV setups, splints, suction unit, you name it, we got it in here. So Wow. And then these are other hoses. yeah, so this is just more intakes and discharges that are tied into the pump panel. Just we have them on this side too, just in case, depending on how you showed up to the scene. If you needed, instead of having to flip the entire apparatus around, you have access to it from this side as well. So pretty much, which way your truck is parked, Right. the access to it. Absolutely. The hoses up there. Yeah. And then how what is that? This is where. So inside the back seat, this is where our firefighters are going to sit. Okay. So when you first come into the department, your role as a firefighter is sitting in the back seat. You're the one pulling the hose line first. You're the one first to the patient, making all the contact and all that stuff. So guys, look how tall the blue thing is, and up there, all the way. I'm kind of liking it. yeah, And it's a good gig. fine job. You have all kinds of devices here, and you carry all the AED devices, Yes. defibrillators and whatnot. Okay, perfect. And So the next seat here, this is where the lieutenant sits. So my position, but on the engine, they're in charge of the crew.
So they're here. They're the ones. We have a little iPad set up in there, so they're getting all the call information. They're preparing the crew for what they're about to see, what they're about to get into. Okay, perfect. And then let's see the driver's side. Yeah, absolutely. The siren, man. The siren is something. Okay. Can I sit there, please? Yeah, absolutely. Climb on in. And look at me. Wow, this is the first. How the heck to drive these things, man? So all your controls to your right, that controls obviously, not only just your normal vehicle like park, drive, reverse, but you have the controls to turn it into pump mode, which is what we would need to operate the hose lines and everything. That wire that's right above you, that is what controls the air horns. Can I pull it? It might. I mean, you can. It might not do it just because it's not started. electronic. Oh, it's Give it a pull. like this way? Down. Oh no, we're good. You're good. You're popping off. You're good. You're not the first time. Won't be the last. So. Well, I feel like a Terminator on this. Right? The T-1000, the guy who came out from the Mercury map. Yeah. Oh, he was a person there with the fire truck. Side of the fire truck. This is a big steering, you can see. And there you go. Then this is how it looks from this side, all their jackets and everything. These are all kind of switches. I already broke something in this. I'm not clicking anything here. I don't want them to slap me with a big bill here. So, and then pump in drive, heated mirror, whatever, carrying capacity. We call that our aerial. Can we just take a look? Yeah, absolutely. We can walk over there. Ferrari is that? That's Ferrari, man. It's the one we're trading, right? Yeah, well, yeah, I want. Apparatus. The ladder on the top can extend to about 100 feet. And then we have a basket in the front that we can operate out of. There's a nozzle that's up front that we can just, if there's, again, if there's a large fire, too large where we're going to send anybody inside the building, we'll attack it from the outside. So you said this is like $3 million, this truck? About $2.5–3 million, yes. And this nice shiny thing. Yeah, these are brand new to us. We just got them in, and so we're going through all the maintenance testing and making sure everything is good to go, and they're about to hit our streets soon enough. So How high does this ladder goes? How many stories? So it's 100 feet, so it just depends on the angle that you're at. I'd say it'll probably 6 stories, 7 stories. So we have the old bank tower, or the electronic caregiver tower downtown. That's a 10-story building. We'll probably hit about 7, 8 stories. Biggest building in our town. Right. The skyscrapers. Right. The 10-story skyscraper. Yes. Okay. And then at the front, can I stand on it? No. Yeah. No. Absolutely. You can stand on that. Oh, look at that. This is the basket you said, right? Yes. The basket that, how many people can go at a time on this? Usually we'll have probably no more than 2 guys up there, just because it can get real crowded real quick. So we never go do things on our own. We're always at least 2 people wherever we're going. So. Well, this thing is humongous and like a Godzilla. And this ladder can extend for 100 feet, like 6 stories. And what's funny is a portion of our entrance exam, you take your test, you take the agility test. We actually put people through an acrophobia test, or fear of heights, because Las Cruces is such a small, 1–2 story town. People might not even realize they're afraid of heights until they go do it. So we'll have the ladder truck fully extended, and we'll have people climb the ladder and then get to a certain point and then climb back down. They're in a harness and everything, so it's very safe. But some people, it happens every academy process. We'll have somebody go up and then they just freeze because they've never been that high before. So it's kind of interesting. Get that. Yes.
Well, and then pretty much all this stuff is the same stuff that we saw. Yeah, so they're going to be more geared towards the extrication stuff or extra tools to do search and rescue inside the building. Look at the piston. Wow. Hydraulic. Huh? Oh yeah, absolutely. And that's the hazy lights and all these lights up. And Mhm. I'm sure the sirens on these ones are probably more crazier and wake up the dead. Hey, we got to let people know we're coming. Also, So people coming out of the cemetery, "Oi, who wake up? Who woke us up? We were sleeping here." And then this is something that moves, huh? yeah, so the platform rotates from back here. It can rotate all the way around. You know, because you can control it from not only down here, but there's controls up in the basket as well. So it controls 360 degrees. I don't believe it'll do a full 360, but pretty close to it. Have you watched that movie? It's an old movie. It's a Mad Mad World. Yes. That's where in 1950s or 60s that movie, and that's where they showed a snorkel and and that thing was going like this. All over the place. All Yep. over the place. Right. So same thing. The hoses. Yeah, we'll have the trucks will have extra ladders in them and stuff like that. I'm just loving the paint, man. Oh yeah, yeah, Yeah. Wow. Same thing. yeah. A bunch of extra ladders. I bet this looks gorgeous at nighttime with all the lights on. Oh, very much so. Because there's even lights all the way up the ladders as well. So it looks real cool, Well, all lit up. Sometime in future, if you guys are doing some kind of a demo, I would love to come back. Absolutely. Feel of that, and you know, that would look nice. Yes. Oh. Every firehouse is your own sleeping quarters, your own bedrooms. We have a full kitchen. There's office areas that we can do our reports in. Every station has a gym because we have to stay in shape. And then we definitely have our bay to keep all of our apparatus safe and out of the elements. So what's cool about this station, being up at the airport, we have this, it's called the crash truck. So it's specialized to the airport, giant off-roading vehicle that you can do really. Wow. So basically, it can go in water and everything too. So Flooded area. well, to an extent. I mean, obviously because it's lifted and everything, we can get into larger areas. So Okay, this is so high. what's really cool is up front though, is it has a water turret in the front and up top, but these can be operated while the vehicle is driving as well. So with our engines, we can't run the hose lines while we're driving, but this one is built where you can shoot the water turrets while you're still driving around. And this is like it's shaped like a boat. Yes. Just to get in the Yeah, just to get you know, protection from wherever we're going. Obviously, if you know we're dealing with downed aircraft or something, it might be a fuel spill that we're dealing with. So Yes. And how does it look from inside? oh, there we go. All right. In please. Okay. So, the steering is in the center. It is dead center, so definitely a different setup in here. This. And what is called the hazard vehicle? A crash truck. Crash truck. Look at that. This is the inside of that green crash truck. Is huge, and I've never seen these on the road. Oh yeah, you won't. These are definitely specialized for the airport. Okay. And so this is me sitting here at the midget, and the truck is so big, and look at that again. I'm just intimidated by the way it's the layout there, and with the steering wheel, and then all these are joysticks. What are these joysticks? So the joysticks are what control those water turrets. So you can be driving the steering wheel with one hand and controlling the water turret with your other hand. Wireless and what is that? Oh, these are just the bells. These hoses up here. So every bay is going to have an exhaust system. So you can hook up the hose into the apparatus exhaust, so you don't get the fumes building up inside of the bay. They'll exhaust out of the structure. Got that. And these are the smaller ones. Really quick. Just need bigger. So 1 minute description of that. So this is actually like a old reserve truck that we had, a brush truck, to where it's smaller. And on the very back, actually, this is a hose reel that we had set up that we could kind of
go attack smaller fires, brush fires. We had this on the East Mesa before it started really fully getting developed and stuff, and we needed the full-size apparatus out there. So Perfect. And this is the back of that, the cracked Wazel. So it's like, Nunan. Yeah, and then these are some. yeah, just some off-road vehicles for us. We use them for special events. We'll have smaller EMS kits with us, but that way we can get around the event pretty quickly. So Perfect. And let's go inside, guys. Follow me, and let's show you how what the lifestyle is inside. Lipan, please, after you. thank you. See. Wow, this is. Please tell us about this. So we have dorms. So again, everybody has their own room. So own bedroom. They can come in. There's 3 different shifts that we have. So A, B, and C shifts. So 3 guys might be in the room, but obviously not at the same time. So whoever is posted on that station, they have this private room. They keep this up here and everything. right. We kind of, yeah, you wanted this one that was kind of is set up. Good thing. Yeah, you want to make sure. Okay, so this is the place, guys, that they sleep. There's a TV up there, and then Yeah, pretty basic setup. Don't do a whole lot. Depending on how busy you're sleeping. you're not supposed to be too comfortable. Right. Because you can be. Some nights you must be waking up every hour, Right. or some nights, quiet nights. And when I was a doctor, when I was working in the ER, we were not supposed to say the word quiet. Yes, absolutely. True. Oh yeah. And I've noticed that one time I was in as a resident in ER, and I went to the ER and said, "Well, it's quiet up here." All the nurses looked at me like they're going to just kill me. Yes. Did you say that word, Raz? Yes. Seriously, did you say that Q word? I said, "Well, okay, so what's the big deal?" Yep. Well, you're going to take all the calls from now on. Yep. And trust me, in 5 minutes, the radio was going crazy. The helicopter is coming. The sirens are going. See what you did. Yes. You said that word. Absolutely. Don't say that Q word. It works the same here. It works. Okay. Under the jacket there. We just go through this way. Cool. So now, headed into our living quarters. oh, okay. So guys, look, this is like a little house for them. This is obviously this is our home for 48 hours. 48 hours. So each shift is 48 hours. Yes, sir. Okay. And so basically you have TV. Yeah, living room area, dining room area, kitchen area. Here. But when is the next time you guys are doing the barbecue? Oh, we'll let you know. Get it going. Good cook. I can come and cook for you. Back. There you go. We're always up for Let it. me drive that snorkel outside. Right? Nice. Look at this good sized kitchen, guys. And then we can continue on down this way and Each station usually kind of has a theme for what they do. So our kitchen table is supposed to look like airplane wings, since this is the airport. yeah, and you can see like tiny pictures on the wall. That's our old crash truck. The smaller one of the 2 that you saw in the bay. So you can see it kind of going wherever. And then layout of the airport. We try to have a map of the district that you're covering. So this is the airport station. So layout of the airport, knowing where everything's at, how things function. Runways, taxiways. See our. Okay, look at that, guys. See these. No wonder these guys are. The free gym membership. There you go. We'll just spend $1 to that other gym outside. This is a free gym. Yeah, so we want to make sure that we have enough time to work out, get a good workout in every shift. Because again, if we're not in shape and we're trying to show up and help you, and I don't know. I think the same thing, man. If I'm smoking or have a belly like this, and I tell people to lose weight and quit smoking, yeah, my patient's not going to take me seriously. absolutely. See, they are a symbol of fitness and dedication, and whatever it takes to achieve that. Great job. All these. Wow. Perfect. Not a bad setup, right? No. And we're fortunate each station has a weight room, so you don't necessarily have to come up here, or we don't necessarily have to get a gym membership. Yeah, look, let's go to hours like sir, suppose you guys work out daily. So yes, sir. Why to miss a day of a workout? Have it up here. Yes, sir. We have a training room up front, so if we need to hold any, small classroom trainings or anything like that, we can host them up here.
Not every station has a training classroom like this, but just this one's up here because we have our training tower nearby. We can do some classroom session first, then go out to the tower and do some hands-on training. Perfect. The airport staff utilizes it as well for their airport meetings, and makes it a little bit more group session type. Nice. And then, And then here we have our. Oh, go ahead. tell me about the suit, please. What is that thing? Look at that. This looks like the alien suit. So we kind of went away from this. Some of the departments throughout the United States still use this particular suit. They're called silvers. And with airplane fires, the fuel is one of the biggest threats when a fuel fire, because it burns that much hotter. Yeah. So this was kind of the thought process back in the day, was the silver reflected that heat more than our bunker gear did. However, with technology and stuff, we kind of phased away from it. Our our bunker gear is new technology, new material and stuff. So now they figured that our bunker gear was adequate enough. But those we look like space aliens kind of back in the day. And some, I'm not sure if it's more cost effective but some departments across the U.S. I believe still use Some of them still use it. Yeah. And then down here we have our office setting, because every call we run, we have to write a report for it. We have to document it just like you would with your patients and everything. So we got to make sure that we're good to go. Airport radio is set up, so all the airport traffic that you might hear, planes coming in or taking off, we're going to hear all that here as well. Nice. Document. The computers as well, trainings, emails, stuff like that. Sometimes it takes more work to document that absolutely. As a doctor, I know, and I see patients, but to put their history in there and what I did with them takes forever. Yes. Perfect. So I think you covered pretty much everything. That is just welcome to Los Cruces. Yeah, just the water tower. This is, and gentlemen, I cannot thank you enough. Absolutely. We appreciate you coming by. So. Well, I am very happy to be here, and it puts me at ease that the safety, our safety, and the firefighting skills of the city are in great hands. And sir, thank you for your time. Thank you, sir. Appreciate it. Very nice to meet you. Please keep up with the good job, and they're role models for every youngster and every person who is out there to help the community in some shape or form, whether you're a police officer, firefighters, paramedics, EMTs. They all are our heroes, and they don't wear capes, but they're heroes. We have Batman, Superman, and Spider-Man who have fantasies, but these are real-life heroes. Guys, thank you very much. And Appreciate it. we love visitors. So Las Cruces is usually open door policy. If anybody wanted to visit the station or anything like that, I'll bring my son sometime. Absolutely. We'll have it in- Going on by. Maybe I'll just come and steal that truck. More time. They're gone in 60 seconds, that movie. Yeah, there you go. I'll give you a ride for sure. Yeah, perfect. In fact, yeah. Thank you very much, guys. All right, guys, we are going for a ride in a fire truck. Please go ahead. So whether it's an emergency, whether it's not emergency, again, it's my responsibility. However, to show you an emergency call and how loud it is, well, inside and take a short route with lights and sirens, and then we'll go from there. Let's do it. So we get the call, the tone outs come in, everybody's good. I got to make sure everybody's buckled up, or else it'll beat really loud. There you go. Yeah. And then, of course, safety. Guys, we are going to save a life. Ready? Lights,
Camera action. Camera action. And with the windows up, it's not too bad in here, so we can communicate, and the lieutenant usually will give us instructions before we get the scene. He'll make some decisions, but as the driver, it's my responsibility. Once again, I got to make sure we get there safe. And then depending on what the emergency is, if it's fire, I got to park strategically. This will change the sirens. No. And you'd be surprised how many people can't hear that, that don't pull over and get out of our way. So again, the driver's got to be on their toes and then watch for the other drivers all the time. It must be very frustrating sometimes that you are in a rush and the people are not moving away from. Absolutely, absolutely. Guys, this is one of a kind experience. And it's tough to see the outside lights and stuff, but once we get back, if you want, we can post you up, and then I can pull out of the bay, and then you can see the lights as well. If you want to do something like that, but I'll get us back to the station. Well, by the way, I don't have any water in my swimming pool. Can you just go to my house and fill that up, please? You know, in the past, we used to do that. For community service. Yes, sir. All right, wow, and this is and where's the horsepower on this truck? Hey, how fast you can go? So this one's a little bit different. This unit's a little bit different because it's stock, but it maxes out about 72, which is perfect for this highway, because we cover I-10 from the fairgrounds all the way down into the city. Right. So it's just about it's governed at the right speed for the highway for sure. I see. Have you guys ever been pulled over by cops speeding too much? We have not, fortunately. All right. But so this particular engine, I'm sure Danner went over it. It's a little bit different because we're a little further out. Yeah. So it holds more water, and to get into town, to get to backup, it's a little bit longer. So it gives us a little bit more time in case of an emergency. Right. But again, same thing. Yeah, that's the same truck that we just interviewed. Yeah, I saw. And so those are our tones. Uh-huh. So another unit is getting toned out. That's how we know we're getting called out, basically. Rescue Port Truck 4, response to 2030 South Belshore Boulevard, 2030 South Belshore Boulevard, habitual fault, problem. And so on the dispatch, it'll tell you which unit it is, and then it'll tell you the address, Right. and then what the emergency is. Okay. So that was truck 4 and rescue 1. So they know that they're going to an emergency and then to a specific address. And I'm not sure how he explained the computers. Yeah. That it shows the. So not everybody can drive the truck. You have to be a designated truck driver. Yes, sir. You have to promote to the position, so everybody starts as a firefighter. And so obviously you cannot have any tickets on your history or anything like me for being a fire truck driver. But I can bet you one thing, I'll get there faster than any of you guys. Right? I bet. Figures. Yeah. All right. Cool, man. This was a great experience. I would like to bring my son sometime and, so have him take a up close look. But Yes, sir. Absolutely. And what we used to do, because we're up here a little bit slower, we would even light a couple of pallets on fire or something and have the little ones. We'll get out and pull the fire hose to put out the fire. Hey, man. Lovely experience. I just can't believe that you guys have been so gracious. Oh, yes, sir. Absolutely. Go above and beyond to help us, let us record everything, including your inside of your little house and all these crash truck and fire trucks. And well, sir, thank you very much. And Yes, sir.
Well, I appreciate that. Thank you guys for having me. थैंक यू। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब किसी शहर पर गिरता है, तो क्या लोग सिर्फ उस वक्त मर जाते हैं या असल तबाही उसके बाद शुरू होती है? 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बम गिराए गए, तो हजारों लोग एक लम्हे में जलकर राख हो गए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जो लोग इस ब्लास्ट से बच गए थे, वो बाद में एक ऐसी बीमारी का शिकार हुए जिसे इस वक्त कोई समझ नहीं पा रहा था। उनके बाल झड़ने लगे, जल्द उतरने लगी और जिस्म अंदर से तबाह होने लगा। इसे कहते हैं रेडिएशन सिकनेस। तो सवाल यह है कि अगर आज किसी शहर पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए, तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है और इंसान के जिस्म के साथ असल में क्या होता है? सेकेंड्स आफ्टर एक्सप्लोजन, जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, तो तीन चीज़ें एक साथ होती हैं। थर्मल रेडिएशन, दर्जा हरारत या टेम्परेचर हज़ारों डिग्री तक पहुंच जाता है। इंसान की स्किन इंस्टेंटली बर्न हो जाती है, कपड़े और बिल्डिंग्स आग पकड़ लेते हैं। ब्लास्ट वेव नंबर 2, ज़बरदस्त प्रेशर वेव आती है, इमारतें गिर जाती हैं जैसे कार्ड के घर बने हों, लोग हवा में उछल जाते हैं। और नंबर 3, रेडिएशन, जो कि इनिशियल रेडिएशन होती है, गामा रेज और न्यूट्रॉन रेडिएशन, जिससे उनके सेल्स फौरन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। हिरोशिमा में लोगों के जिस्मों के शैडोज यानी साए तक दीवारों पर इम्प्रिंट हो गए, क्योंकि हीट इतनी इंटेंस थी। नंबर 2, फायर स्टॉर्म, यानी मिनट्स टू आवर्स के अंदर शहर जलने लगते हैं। ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में आग लग जाती है, इसे कहते हैं फायर स्टॉर्म। ये आम आग नहीं होती, ऑक्सीजन तेजी से कंज्यूम होती है और लोग सफोकेशन यानी दम घुटने से मरने लगते हैं। हिरोशिमा में पूरा शहर एक जायंट फर्नेस या तंदूर बन गया था, जहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि एसफॉल्ट पिघल गया था। पार्ट 3, रेडिएशन एक्सपोजर, जो कि इनविजिबल किलर होता है। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, रेडिएशन। ये नज़र नहीं आती, इसे कहते हैं तापकारी। इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, लेकिन ये जिस्म के अंदर जाकर तबाही मचाता है। रेडिएशन क्या करता है? डीएनए को डैमेज करता है, सेल्स की रिप्रोडक्शन को रोकता है और इम्यून सिस्टम कोलैप्स यानी ख़त्म हो जाता है। अब एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम क्या होता है? ARS। जो लोग ब्लास्ट यानी धमाके से बच जाते हैं, उनमें चंद घंटों या दिनों में सिम्टम्स अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, जिसमें अर्ली सिम्टम्स नौजिया, वॉमिटिंग, एक्सट्रीम फटीग, डायरिया, बाद के मराहिल में बालों का गिरना, स्किन को पील होना, अंदरूनी ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस। और हिरोशिमा और नागासाकी में हज़ारों लोग ब्लास्ट के बाद नहीं, बल्कि अगले चंद हफ्तों में सिसक सिसक के मरे। अब वो जहरीली बारिश जो ब्लास्ट के बाद आवर्स या डेज के बाद होती है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में उठते हैं और फिर ज़मीन पर वापस गिरते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फॉल आउट। ये पार्टिकल्स मिट्टी पर गिरते हैं, पानी को कंटामिनेट करते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। काली बारिश या ब्लैक रेन, जिसे हिरोशिमा केस कहते हैं, हिरोशिमा में ब्लैक रेन हुई ब्लास्ट के बाद। ये बारिश पानी नहीं थी, बल्कि रेडियो एक्टिव सूट और केमिकल्स का मिक्सचर थी। लोगों ने ये पानी पिया और बाद में सिवियर इलनेस का शिकार हो गए। वाटर और फूड कंटामिनेशन, तापकारी सिर्फ हवा में नहीं रहती, ये पानी में शामिल हो जाती है। क्रॉप्स यानी फसलों में जज्ब हो जाती है और एनिमल्स के जरिए फूड चेन में आ जाती है, जिसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म पॉइजनिंग, ऑर्गन डैमेज, बर्थ डिफेक्ट्स। और लॉन्ग टर्म, सालों के बाद क्या होता है? न्यूक्लियर अटैक का असर सिर्फ दिनों या महीनों तक नहीं रहता, बल्कि सालों तक जारी रहता है। कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, लुकीमिया यानी ब्लड कैंसर, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर, मौरूसी बीमारियां यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मेंटल हेल्थ यानी आसाबी कमजोरियां, PTSD विच इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज़ और सिंड्रोम, और एंजाइटी और डिप्रेशन। हम बात करते हैं चेरनोबिल, उससे कंपेयर करते हैं। आपको समझना चाहिए कि रेडिएशन क्या करती है। तो चेरनोबिल को देखें, जो कि रशिया में 1986 में वहाँ न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, तो इफेक्ट्स में पूरा शहर खाली कर दिया गया। आज वो एरिया अभी तक अनसेफ है और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी म्यूटेट हो गई है। ये वॉर नहीं थी, सिर्फ एक्सीडेंट था। फिर भी इतना नुकसान हुआ, सोचिए अगर न्यूक्लियर बम होता तो क्या होता। अब सर्वाइवल कैसे किया जाए? अब सबसे अहम सवाल, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कैसे बचा जा सकता है? शेल्टर यानी थिक कंक्रीट बिल्डिंग या अंडरग्राउंड में जाएं। टाइम, पहले 24 से 48 घंटे क्रिटिकल होते हैं। प्रोटेक्शन, स्किन को कवर करें कंटामिनेटेड
एयर से बचें और डिकंटामिनेशन करें। जल्दी से नहाएं, कपड़े तब्दील करें, आयोडाइन टैबलेट्स लें ताकि थायराइड ग्लैंड प्रोटेक्ट हो सके। तो न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक हथियार नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा डिजास्टर है जो एक लम्हे में शहर को तबाह करता है और सालों तक इंसान को अंदर से ख़त्म करता रहता है। सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि रेडिएशन यानी तापकारी नज़र नहीं आती, लेकिन साइलेंटली, क्वाइटली इंसानी जिस्म को अंदर से खोखला कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग इस हकीकत को समझें तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नॉलेज ही सर्वाइवल है, नॉलेज ही पावर है। मैं हूं डॉक्टर इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा यूएसए यूट्यूब चैनल। आपकी बेहतर सेहत ही मेरा मिशन है। खुदा हम सबकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine. अगर मैं आपसे कहूं कि जग में ज़्यादा लोग बम धमाकों से नहीं बल्कि हवा से मर जाते हैं तो शायद आपको यकीन ही ना आए, लेकिन ये कोई अंदाज़ा नहीं है, हकीकत है। डॉक्यूमेंटेड कुवैत ऑयल फायर्स और इराक वॉर से, इसके दौरान गल्फ वॉर 1991, जब इराक ने स्पाई इख्तियार करते हुए कुवैत के 600 से ज़्यादा ऑयल वेल्स को आग लगा दी तो आसमान पर दिन के वक्त भी अंधेरा छा गया था। लोग जिंदा तो थे, उनके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन लंग्स आहिस्ता आहिस्ता फेल हो रहे थे और चंद महीनों बाद क्रॉनिक लंग डिजीज और कैंसर इन्हीं लोगों में डायग्नोज होना शुरू हो गया। तो सवाल यह है कि अगर आज किसी शहर में मिसाइल हमला हो जाए तो असल खतरा क्या होता है और क्या हम इस खतरे को पहचान भी सकते हैं कि नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो डिटेल में आमतौर पर आवाम को नहीं बताया जाता। मिसाइल अटैक सिर्फ ब्लास्ट नहीं होता जो हम आमतौर पर समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक मिसाइल हमला 3 स्टेजेस या मरहाइल पर मुश्तमिल होता है। प्राइमरी इम्पैक्ट, एक्सप्लोजन यानी धमाका, हीट वेव गर्मी की लहर, शॉक वेव। दूसरा सेकेंडरी इम्पैक्ट, बिल्डिंगों का गिरना, आग लगना, हैजर्डस मटेरियल्स का रिलीज होना। और सबसे खतरनाक तीसरे नंबर का इम्पैक्ट, टर्शरी इम्पैक्ट, एयर कंटामिनेशन यानी फ़ज़ा की आलूदगी, वाटर कंटामिनेशन पानी की आलूदगी, और सोइल टॉक्सिसिटी मट्टी का ख़राब हो जाना और टॉक्सिक हो जाना। और हकीकत यह है कि इस तीसरे मरहले में जो होता है इससे लॉन्ग टर्म डैमेज होता है ज़्यादातर। अब एयर पोल्यूशन, और जिसको हम इनविजिबल किलर भी कहते हैं, मिसाइल जब किसी शहर में गिरता है तो सिर्फ कंक्रीट नहीं जलता बल्कि प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वायरिंग, फ्यूल, केमिकल्स, टॉक्सिक गैसेस में सब कुछ तब्दील हो जाता है। और इन गैसेस का नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्सिन्स भी होते हैं इंतहाई ख़तरनाक। और सबसे अहम PM2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं और ये आपके फेफड़े या लंग्स के अंदर जाकर आपके एल्वोलाई तक पहुंच जाते हैं जो गैस एक्सचेंज चेंबर्स होते हैं, और फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के अंदर। मेडिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज मुतासर होता है, ब्लड थिक होने लगता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और इसलिए लोग कहते हैं कि हम वॉर जोन से तो बच गए लेकिन हवा से नहीं बच सके ब्लास्ट होने के बाद। अब हम समझते हैं रियल एग्जाम्पल से कि जब इराक और कुवैत के जब ऑयल डिज़ास्टर हुए तो गल्फ वॉर के दौरान जलाए गए कुवैत के वो कुएं जो 10 महीने तक जलते रहे, तो उसके असरात की वजह से पूरा आसमान ब्लैक स्मोक या धुएं में ढक गया। डार्कनेस दिन के वक्त भी थी और एयर क्वालिटी इंतहाई डेंजरस लेवल पर चली गई। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजीन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सल्फर कंपाउंड्स ने लंग्स को डैमेज किया और टॉक्सिक पार्टिकल्स ने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर किया। रिजल्ट क्या हुआ इस चीज़ का? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी हज़ारों अफराद में एज़मा यानी अस्थमा या सांस की बीमारियां, बच्चों में, बड़ों में, और कई केसेस में कैंसर भी। ये सिर्फ जंग नहीं थी,
एनवायरमेंटल कैटास्ट्रफी था। एसिड रेन यानी जब बारिश भी जहर बन जाए। अब हम एक और पहलू पर नज़र रखते हैं। फ्यूल और केमिकल्स जब जलते हैं तो गैसेस फ़ज़ा में जाकर बादलों के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पैदा होते हैं, जिसे हम एसिड रेन फॉर्मेशन कहते हैं। और जब बारिश होती है तो वो पानी साफ नहीं रहता, बल्कि केमिकल मिक्सचर बन जाता है और इसके असरात आपके स्किन की इरिटेशन की सूरत में, आंखों में जलन, फसलों का नुकसान, पानी का कंटेमिनेट होना। और अगर ये पानी ड्रिंकिंग वाटर में शामिल हो जाए तो ये आपके जिस्मानी आज़ा को भी डैमेज कर सकता है। और फिर ह्यूमन बॉडी पर इसके असरात, अब सवाल ये है कि ये सब आपके जिस्म पर असर क्या डालते हैं। फेफड़ों में यानी लंग्स के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एज़मा ट्रिगर्स, लंग कैपेसिटी को कम करना। अब हार्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है? ब्लड प्रेशर बढ़ना,